Nithyanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gagana Sadrisham Tattvamasyadilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Nithyanandam, welcoming one and all for this very special, rare Aushadha process where Swamiji is going to be preparing the Mahasadashivoham Aushadha on this very special, rare, unique day of Chandra Grahana, the day of the lunar eclipse. As we get started on this very special event, which happens once in 150 years. The last time this specific phenomena happened was 152 years before. And today, that very rare phenomena is happening again. So what is so special about today? And why we are having this very unique event of Shivastra Maha Shanti Homa? Why are we having it today? What is the uniqueness of today? What is the speciality of participating in this Homa in the presence of the rare living avatar? Let's find out. Let me start with introducing to you about what is a lunar eclipse. I request the vision team to project the slides. What is a lunar eclipse? Lunar eclipse is when the sun, earth and the moon are in perfect synergy, where the earth comes exactly in between the sun and the moon, thereby preventing the sun rays directly from falling on the moon. So the sun, earth and the moon are in the perfect line. That is the lunar eclipse.
generally being heard. What is a misnomer that we have? There is a myth and there is a misnomer that during an eclipse time, all the deities lose their power, which is completely absurd, because of which people say the temple should be shut. Sadashiva in the Agamas very clearly mentions that during the eclipse time, during the Grahana Kala, special pujas, special abhishekam, special Homa, all these need to be done. So, what happens for the human beings? Sadashiva says, Sarva prajanam bhuloke mahasparsham vidhiyate taddosha shamanarthaya snanam danam japam yajet. Because of the rise of Rahu and Ketu, the shadow planets, Rahu and Ketu are the only two planets which are actually belonging to the demonic family. Because of the rise of Rahu and Ketu, a dosha, a phenomenon called Mahasparsha happens for all the people who live on the planet Earth. Sadashiva says, Sarva Prajanam, for all the people who are all living on the planet Earth, the phenomenon called Mahasparsha happens. He also continues saying that, so here arises a question, because Sadashiva says it is a dosha, are we not supposed to be refraining ourselves from worship, refraining ourselves from entering a temple? The first thing is, because Mahasadashiva says that for all the people this phenomenon called Mahasparsha happens, and this is a dosha, during an eclipse time, that is, once an eclipse has started, people should refrain from entering into the temple. But this doesn't mean that the temple should be shut. And also, if you are already entering the temple before the eclipse begins, you do not get in touch with this dosha. So, why this happens? When you enter into a temple before the eclipse begins, this dosha doesn't touch you. Because a temple is an alaya, is the body of Sadashiva. The temple is the body of Sadashiva. When you enter into the body of Sadashiva, nothing can touch you. Sadashiva also mentions about the quality of time. Suryoparaga kalecha adau punya prashamsanam chandroparaga samaye ante sarvahitam bhavet. Sadashiva mentions the time of eclipse, the Grahana Kala, as a Punya Kala. He also mentions in the earlier verse that the dosha happens to all beings, but the time is so auspicious. In the Agamas it is mentioned that whatever you do, Sadashiva in the Agamas mentioned that whatever puja, whatever penance, whatever japa that you do during the eclipse time actually gives you tenfold benefit. If a japa means a chanting of a mantra is supposed to give you a certain benefit to you, if you are doing that same chanting during an eclipse time, that gives you 10 times the same benefit what you will be having during a normal time. For a solar eclipse, the Punya Kala, the time, auspicious time begins in the beginning. As the eclipse begins, solar eclipse starts, the Punya Kala, the auspicious time starts. For a lunar eclipse, for the Chandra Grahana,
It is on the latter half of the lunar eclipse the auspicious time begins. So during the latter half of the lunar eclipse, whatever puja, whatever homa, whatever japa, mantra japa, chanting of any mantra, whatever you do, you receive the benefit 10 times what you will receive during a normal time. Sadashiva mentions this in the Uttarakaranagama 50th Patala, Shloka number 12. So, if it is an auspicious time, what are all the things that need to be done? Sadashiva mentions Snanam Danam Japam Homam Shambhoryajanamuttamam. So, during the Grahana Punya Kala, during the auspicious time of an eclipse, what are all the things that need to be done? Snana, the sacred bath. Dana, giving away of certain prescribed things as to a Brahmana, giving away. And Japa, mantra, chanting of mantra. Homa, and also special homa intended towards Lord Sadashiva himself. Shambhor Yajanamuttamam. This dana means, along with the mantras that Sadashiva has laid down in the Agamas, the materials that Sadashiva mentions in the Agamas, along with that mantra, giving away to a Brahmana as specified in the Agamas. That is what the dana means. What else that can be done during this eclipse time? Astra devam tu samsnapya sarve snatva visheshataha. Sadashiva in the Uttarakaranagama in the 50th Patala in the 21st Shloka mentions that sacred bath has to be offered to Astra Deva. Astra Deva is the weapon of Lord Sadashiva. Can you please sit down? Camera. Astra Devam tu samsnapya. He says, the sacred bath needs to be offered to Astra Deva, and the sacred bath has to be undertaken by all of us also. So today, on the auspicious occasion of the lunar eclipse, just before the Shivastra Maha Shanti Homa, we will be performing the Abhisheka to the Astra Deva. Astra Deva is the Astra, the weapon of Lord Sadashiva. So what are all the weapons of Sadashiva? Shivastram chaiva vyomastram ghoram pashupatastrakam kshurikastrancha panchaite shivasyayudha panchakam. Sadashiva says, these the 5 ayudhas, 5 weapons of Sadashiva are Shivastra, Vyomastra, Aghorastra, Pashupatastra and Kshurikastra. So, all these, what will a weapon do? The weapon of Sadashiva, when he throws it at something or towards, when he aims at something, it reaches to the goal and purifies that goal, removing all the impurities, destroys all the negativities and comes back to him. That is the difference between a Shastra and an Astra. A Shastra is a weapon which, when sent towards the goal, does the job of destroying the negativity and falls off there itself. After that, it does not have any life. Whereas an Astra has its own life because it is just an extension of Sadashiva. When we do the Shiva Puja, we chant the 11 mantras, the Samhita mantras. In that we say
Om Hum Ishanamurdhaya Namaha, Om Him Tatpurushavaktraya Namaha, Om Hum Aghora Hridayaya Namaha, Om Him Vamadeva Guhyaya Namaha, Om Ham Sadyojatamurtaye Namaha, Om Ham Shirase Namaha, Om Him Shirase Namaha, Om Hum Shikhaye Namaha, Om Haim Kavachaya Namaha, Om Haum Netrebhyo Namaha, Om Haha Astraya Namaha. This, the last mantra, the 11th mantra is Astra mantra, Aghora Astra mantra. Sadashiva mentions in the Agamas that the body of Sadashiva is made up of these 11 mantras. Mantra is the auditory form of the deity. The form of the deity is the visual form of the mantra. This is the relationship between the sound and the light, sound and the form. So, like how your hands are your own part, continuously when you wear spectacles, it becomes the part of your own self. When you have a nose stud or a earring and you are continuously wearing, it becomes a part of your body. It becomes a part of your own self. Like that, this weapon, Astra, Shivastra, is an extension of Sadashiva's body. So, when it is aimed and sent towards a goal, it reaches the goal and removes the negativity and comes back to Sadashiva's body. The Trishul of Sadashiva is an Astra. The Astra Deva, the deity of Astra, to whom we will be offering the Abhishekam, the sacred bath, will be in the form of a Trishul. So, Sadashiva mentions that the sacred bath, along with the proper rituals, the Abhisheka, the sacred bath, needs to be offered to this Astra Deva. So, what is the benefit of performing the Shivastra Maha Shanti Homa? Here, after the sacred bath for the Astra Deva, we will be offering the Homa, Astra Homa. We will be invoking the Pashupata Astra. If somebody has heard Mahabharata story, Arjuna did intense penance towards Lord Sadashiva to receive the Pashupatastra, and Sadashiva himself came down and did the Leela of fighting with him, tested his valor and gave him the Pashupatastra. The Pashupatastra is the ultimate Astra, ultimate weapon, beyond which there is nothing existing. If the Pashupatastra is used towards anything, that simply destroys that and creates space. Because Shiva is the energy of rejuvenation. Rudra, Sadashiva is the energy of rejuvenation. He creates the space for something new to happen. So, in the Agamas, Sadashiva mentions that for various sins, for various karmic baggages to be removed, if somebody wants to be rid of some specific karma or specific sin, Sadashiva recommends the person to offer Astra Homa. Astra Homa relieves a person from deep, long, so many janmas of karmas. So, we will be invoking the Pashupatastra in the Kalasha, the sacred water pot, and we will be offering the Homa. The Homa is a Vedic fire ritual wherein you will be invoking the cosmic energy in the fire element and offering the oblations to that energy, thereby invoking the grace of that specific deity which is invoked into the Homa Agni. That very energy which is invoked is later transferred and merged with the sacred water pot which contains the sacred water, and finally that water will be sprinkled on all of the people who are there around the Homa as a prasada, as a benefit, as a fruit of the Homa. So, it is invoking the Shiva Pashupatastra, Sadashiva's Pashupatastra in the
Kalasha, in the sacred water pot, and also in the Homa Agni, in the sacred fire, and continuously chanting the Pashupatastra mantra and energizing the fire, and finally merging that energy into that sacred water pot, and that water being sprinkled on all of the people who are there here. So what happens? Simply the effect of the Pashupatastra happens on all of us, thereby relieving all of us from deep-rooted karmic baggages, which actually result in life in various different forms. It manifests as continuous recurring debts, recurring loans, debts, again and again falling sick, again and again continuously accidents happening in life. If somebody may be trying for a job, they wouldn't even get a job, or if they get a job in few days they get chucked off. This a phenomenon that continuously happens in life, and they get stuck in life. If you are experiencing any of these symptoms, or if you are experiencing constant fight at home, if you are experiencing breakup in relationships continuously, it is because of your past life's karma. The past life karma can be, you can be relieved from that by offering this, by participating in the Shiva's Maha Shanti Homa. When it is done during the eclipse time, as we already told, it gives you 10 times benefit, more benefit. Sadashiva mentions much more about the benefits in the Agamas. Evam yak kurute raja sarva papai pramuchyate. The king who performs this Homa gets relieved of all the sins. Sarva vyadhi prashamanam, sarva pida nivaranam. One gets relieved from all the vyadhi, diseases, and also all the difficulties. Pida means all the disturbances that you experience in your life. All the pains, whether it is mental pain or physical pain, whether it is some disturbance from some person or from your own self or from some black magic, whatever it is, you get relieved from this. Dhanyam yashaskaram putra pautra vriddhi pradayakam. He says, by offering this puja, special pujas during this eclipse, lunar eclipse, you experience immense, great name and fame. Your family, your generation grows by you having to giving birth to children, and you get a longevity to see your grandchildren. Sarva papa haram punyam sarva yajna phala pradam. It removes all the sins. Sarva papa haram removes all the sins, and it gives all the punya, all the benefit of all meritorious activities, deeds. Sarva yajna phala pradam. It gives you the benefit of performing all the yagas, homas. Raja Rashtra Bhivriddhyartham Sarva Sampat Samriddhidam. It not only bestows good and does good to you, it also does good to the country. Raja Rashtra Bhivriddhyartham Sarva Sampat Samriddhidam. Prosperity happens in the country, the place where you live. Sadashiva mentions this in the Uttarakaranagama, 50th Patala, Shloka number 13. So what is the benefit? We are all... Sadashiva also mentions what are all the other things that need to be done during the lunar eclipse. He mentions that Aushadha also in the Shloka number, you mentioned this Shloka? The Uttarakaranagama, 50th Patala, the 13th Shloka, Sadashiva says, Aushadha needs to be prepared during the eclipse time, during the Grahana Punya Kala.
Swamiji is personally preparing this Aushadha for all of us. This Mahasadashiva for all of us. It is utmost compassion. Mahasadashiva, Swamiji himself is going to prepare the Aushadha, thereby instilling in all of us the ultimate thought current of the enlightening thought current of Mahasadashivoham into all of us. The Agamas mentioned that during the eclipse time, the mantropadesha, that is initiation into the mantra, is very, very powerful. Any initiation that you receive during an eclipse time is extremely powerful. There are so many seekers who wait to receive the mantra just for waiting for the eclipse to happen. So, and also Sadashiva mentions the japa. So continuously when you chant mantra that you are initiated into during the eclipse, during the Grahana Punya Kala, you experience immense prosperity, removal of all the negativity and all the benefits that Sadashiva mentioned here. What is the... Yes, we can get the Astra Homa, get it done at home. We can get the Meko Astra Deva and do it at home or in our nearby temple. What is the speciality that happens here in the Adi Kailasa, Bengaluru Adina, when it is done in the presence of Swamiji, Mahasadashiva? Swamiji has always been saying that his breath, the ingoing breath, when he inhales, it goes up to all the 11 dimensions, 11 planes of the universe. It comes down. He has the same breath. The thread of breath that he has is same everywhere throughout all the 11 planes of the universe. It goes to Kailasa in the Dwadashanta and comes back out. The breathings, when Swamiji breathes, he breathes the ultimate supermost state of consciousness, the Turiyatita state of consciousness into the Bhuloka, where we live in. The infusion of the Turiyatita state into the Bhuloka, where we all live, happens. This happens when we are now living. This is the most rarest phenomenon that is happening. The happening of our life when an avatar is on the planet Earth and when the avatar does the Aushadha process, that too during a rare eclipse, which phenomenon of eclipse, which is happening after more than 150 years. During this Punya Kala, this Aushadha is being prepared by Swamiji. When Swamiji infuses that supermost state of consciousness, Turiyatita state of consciousness into the Bhuloka, what happens? Sadashiva in the Purva Kamikagama Archana Vidhipatala says, Jnana Agnis Sarva Karmani Bhasmasat Kurute Kshanat. The fire of the Jnana, the fire of enlightenment, burns away all the karmas in just one kshana. Kshana is just the time gap between one thought and the other thought. In that minutest time gap, Swamiji just burns away all the karmas that we have, relieves us all from all the sufferings, thereby instilling his own state of Mahasadashiva into all of us. This is a speciality, this is a greatness that we are all blessed to receive today on this Chandra Grahan.
also, here here Swamiji himself will be churning the Agni, the sacred fire from the Arani during the Aushadha process, and infusing that same in his own enlightened space, his Swamiji's Mahasadashiva state, into that fire, and that fire will be used to invoke the Astra in the Homa Agni, and the oblations will be offered. So it is very much Swamiji's own Jnana Agni that is going to be invoked here, into which the Homa is going to happen. Nowhere in the planet Earth this phenomenon can happen except in Bengaluru Adinam, Nithyananda Peetha, Adi Kailasa. Whoever is watching this, kindly please do share it virally throughout the Facebook, YouTube, and share the link of nithyananda.tv, so that everyone, every being that is there in the planet Earth gets to witness this rare happening of Swamiji preparing the Aushadha during this during this great eclipse time, auspicious eclipse time, and also witness the Shivastra Maha Shanti Homa. When somebody watches this Shivastra Maha Shanti Homa, they get into the Shakti Nipata with Swamiji. When you are watching it by two-way, when you are watching it by one way, you become entangled with Swamiji, Mahasadashiva. Whoever is physically seated here in Bengaluru Adinam or get entangled with Swamiji in the Shakti Pada, just through this Shakti Pada, whatever process Swamiji is performing during the Aushadha process directly gets into all of our biomemories, whether you are seated here in Bengaluru Adinam or whether you are watching it from your home throughout the world. You do get this benefit of the Aushadha process. Now getting back to the today's special occurrence of this super blood blue moon, a lot of the online viewers have requested if we can just share with us again, because for the technical difficulties they couldn't hear the audio at that time. So I'm just going to quickly brief and share about what is this super blood blue moon. But before we get on to that, I would request all of us to watch the video about the super blood blue moon. The Vision team, play the video now.
Yes. I request the vision team to project the information about the eclipse, the lunar eclipse, and the special significance of today's event. Again, repeating for all our online viewers who just tuned in. The lunar eclipse happens when the moon passes directly behind the Earth's shadow, and this can occur only when the sun, Earth and the moon are aligned exactly with Earth in the middle. Hence, a lunar eclipse can occur only on the night of a full moon, which is happening tonight. The next slide. Here you will actually see in the picture where the sun, Earth and the moon are exactly aligned, with the moon beautifully under the Earth's shadow. The next slide. So what is special today? Today is occurrence of a supermoon where the moon is at its closest point to the Earth and appears to be 14% bigger and 30% brighter than normal. Today is also the second full moon in the same English calendar month, and also it occurs, it's a blood moon because the Earth is passing between the moon and the sun, which gives the moon a reddish tint to it. The next slide. So here actually this is a picture which actually beautifully explains today's the trifecta, the three phenomena that are occurring together. Supermoon, full, and its perigee, which is the closest point to the Earth, makes it appear 14% larger and 30% brighter. The lunar eclipse because the Earth's shadow covers the moon. It's a blood moon because the sunlight skins through the Earth's atmosphere and turns the moon orange or red. And it is a blue moon because today is the second full moon in 1 month. Go to the next slide. So today is a super blue blood moon. When you put all these three together, it's an occurrence of a super moon plus a blue moon plus a blood moon. We call it as a super blue blood moon. The last time all these events occurred simultaneously in the Western Hemisphere was in the year 1866, which was 152 years back. All these three events occurred on the same night. The next slide. Now we are moving on to what is an Aushadha. Why Swamiji is preparing an Aushadha today? What is an Aushadha? Please project the slides. What Swamiji has shared about the Aushadha. Aushadha is a very powerfully created energy-matter combination of herbs, of prana, of cosmic force, of energies, and ultimately the Shaktipada of Sadashiva himself. So Aushadha is nothing but something which directly works on your system and puts you in the same state which is programmed in the Aushadha. For example, Swamiji once created an Aushadha for manifesting the state of Sadashiva, which is the state of complete completion, the state of Nirvikalpa Samadhi. So, the experience of that space of Nirvikalpa Samadhi can be programmed into the Aushadha so that anyone who just applies the Aushadha also experiences that same experience of Nirvikalpa Samadhi just by applying the Aushadha on their skin. That is the power of the Aushadha. It is a very unique combination of energy, herbs, cosmic forces with the Shaktipada of Sadashiva himself, which gives the person who's applying the Aushadha a direct experience of what the Aushadha is prepared for. What is very unique about the Aushadha process is that anyone, vision team please change the slide. Yes, anyone who is present when the Aushadha is being made. All of us who are watching it here live in Bengaluru Adinam and all of us who are watching us on the Facebook Live, when you are watching the Aushadha process, this is the most unique thing. When a specific thought current is inserted into the Aushadha,
Whoever is watching the Aushadha process, the specific thought current gets inserted into all of us as well. So without even applying the Aushadha, when you are just watching an event live, when you are watching the Aushadha preparation live, whatever thought current is inserted into the Aushadha, that same thought current is available in the space where the Aushadha is prepared, thereby implanting the thought current into our system as well. So watching the Aushadha process live, watching the Aushadha preparation live has the exact same effect of actually applying the Aushadha on yourself. Switching back to the slides. So Aushadha instigates the body and takes many things from the cosmos itself and raises the body. It gives an experience of higher conscious states. Aushadha tempers and transmutes the awakening of the whole system for manifesting Mahasadashivatva. One of the unique components of the Mahasadashivam program that we had just this December 2017 was the Aushadha. And we had, close to 800 participants who participated in the program. And the 800 participants were introduced to more than 100 different Shaktis. And whether they had attended programs earlier or they had just come for the Mahasadashivam, every single person was able to live, radiate, manifest the Shaktis, the powers of Sadashiva just by applying the Aushadha. Just 1 year back, see, Swamiji's initiation is the same. But to receive the initiation, Aushadha prepares us to receive and radiate it. When we compared it to Sadashivoham 2016, where Swamiji initiated all the participants into these extraordinary powers, in Sadashivoham the maximum number of hours that we were even able to get initiated and radiate was only 10 powers. Whereas in Mahasadashivoham, in just 25 days, more than 100 Shaktis all the participants are initiated into, and many more Shaktis they'll be manifesting in the upcoming weeks when we are having the continuous education program. That is what an Aushadha does, makes you live, radiate, manifest the space and the powers of Sadashiva extremely casually, effortlessly. Just by applying the Aushadha, you'll be able to manifest extraordinary powers. Powers like increasing someone's height. Powers like increasing the length of the hair. Powers like changing the features in your body. These things you have only heard in science fiction, but when you come here for Mahasadashivam, you will actually experience it happening so effortlessly, so casually in your life. That is just because of the power of the Aushadha. Switch back to the slides. Now during the 60 days of the Mahasadashivoham program, Swamiji intensely radiated that space, that state, space and the Shaktis of Mahasadashiva, and it got intensely radiated through his system, which left a high amount of heat radiating from Swamiji's system. Swamiji's whole body was radiating that tremendous heat. And today, Swamiji is going to be preparing the Mahasadashivam Aushadha by just transferring that heat in his system, basically transferring that experience of Mahasadashiva in his system and pouring it into the Aushadha, making the Mahasadashivoham Aushadha. Literally, the entire experience Swamiji's body went through during the 60 days, prior, during and after the Mahasadashivam program. That experience of Mahasadashiva, which Swamiji was reverberating with, that entire experience is going to get poured into the Mahasadashivam Aushadha today. That is why all of you who are watching this Aushadha preparation today, all of you are so gifted and so blessed that you are all going to experience literally the Mahasadashivoham experience. All that Swamiji had to deliver during Mahasadashivoham, that what experience that he was with, the space that he was in to be able to initiate all the Mahasadashivam participants.
that space that he was in to initiate all the Mahasadashivam participants, he is going to transfer that space into the Aushadha. In Swamiji's own words, Swamiji actually shared during the Mahasadashivam continuous education program, he just shared about the Mahasadashivam Aushadha. I'm going to read his exact words. You can see it on the screen as well. What I take out to settle down, I'm going to put it in you to raise you. That's it. That's exactly what I'm going to do during the Mahasadashivoham Aushadha. So during the process today, that entire experience that is reverberating with is going to get transferred into the Mahasadashivam Aushadha. So today is not just a very rare occurrence in terms of the moon, but it is also a very rare occurrence for us as the Nithyananda Sangha, because it's very rare that such rare, unique Aushadhas gets prepared. I would now like to invite Sri Nithyananda Swami to come and share the Shastra Pramana of what Sadashiva is mentioned in the Agamas during the Grahana Punya Kala, the creation of the Aushadha. Sadashiva is actually mentioned in the Agamas about the creation of the Aushadha. How unique and auspicious is this creation of the Aushadha during the Grahana Punya Kala? So I invite Amba Swami to please come forward and share the Shastra Pramana from the Agamas himself, Agamas by Sadashiva himself. And while he is coming, I also wanted to share, during the Mahasadashivam program, Swamiji had prepared many Aushadhas. We started with the Aushadha of Sattva Tattva. Then he created the Aushadha of Turiyatita, the Aushadha to experience the 25 states of consciousness, and which was given for all the participants to apply on their body, to give them the actual experience of the 25 states of consciousness and 11 dimensions of the universe. So for those of you who are really, I know there are a lot of you out there who are watching and who couldn't make it to the December Mahasadashivam program, do not worry. The next Mahasadashivam is happening on the 31st of March till the 30th of April. The Mahasadashivam program is becoming a 31-day program starting 31st of March. Today, see, anything that stops you from manifesting Mahasadashiva is nothing but our karmas. Anything that stops is nothing but your karma. Otherwise, nothing can stop you from manifesting Mahasadashiva, because that is our true original state. So if it is your karma that is stopping you from manifesting Mahasadashiva, it can be in terms of you're not getting leave, or it can be in terms of you're not having that intention, or it can be in terms of, okay, I am so interested in coming, but somehow things are not manifesting for me. You're not able to manifest the required leave or finances to come here. Do not worry. Tonight is the time where literally Mahasadashiva is going to land, come and burn any of the karmas through his own Astra. Astra means the divine weapon. That's why we are having the Shivastra Maha Shanti Homa. So just have that space to manifest Mahasadashivoham in you. And today when you sit with that space, a deep devotional space of being able to experience that state, space and Shaktis of Mahasadashiva in Swamiji's presence, I can guarantee to you, no karma can come in between you and your Guru. No karma can come between you and the avatar. No karma can come between you and your experience of Mahasadashiva. So tonight, let's use it to manifest whatever you want to manifest as reality. All the Facebook viewers also I wanted to tell, in the sign up form for the lunar eclipse, we had actually put a sign up form where you click and sign up in that form and share what exactly you want to benefit by participating in this event. And whoever signs up, Swamiji is going to bless all those people to manifest that reality. Many of you have written you wanted to manifest some health disorder you have, you wanted to manifest healing from that. Many of you have written you want to manifest Mahasadashivoham. Some of you have written you want to manifest a job, you want to manifest a wealthy life, whatever it is.
Whatever you want to manifest in your life, please go ahead and fill the form and say what benefit you want from attending the Homa. So Swamiji can bless that and make it happen for you. We will be putting the link also in the comments on the Facebook Paramahamsa Nithyananda Facebook page. You can click that link and sign up and share why you are attending this event, what benefit you want by attending this event, so Swamiji can bless that and manifest your reality. Break any karma that is in your way for manifesting that reality. I now request Sri Nitya Ambananda Swami to share the Shastra Pramana of Aushadha from the Agamas. Nithyanandam. Sadashiva in the Uttarakaranagama, 50th Patala and 13th shloka says Snanam Danam Japam Homam Shambhoryajanamuttamam Aushadham Upadeshancha Vidyabhyasam Prashasyate. That is, during the Grahana Punya Kala, the auspicious time of eclipse, Snana, sacred bath, Dana, giving away of certain prescribed materials to a Brahmana as per the Agamic injunctions, Japa, chanting of the mantra to which you are initiated into, Homa, the sacred fire ritual, Shambhor Yajanam, that is invoking Sadashiva in the Agni and worshipping Sadashiva in the Agni, Aushadha, preparation of Aushadha, Upadesha, which is initiation, Mantra Diksha, which is initiation of mantra, Vidyabhyasam, that is Vidya means the connection that you have with the world. You as an individual self, you are there. Sadashiva, the ultimate state of Mahasadashiva, Sadashiva is there, which is your own ultimate state. The bridge between you as you are experiencing now to the real you, Mahasadashiva. What you experience is as the world. Bringing healing, bringing completion in that realm, which is the, Swamiji says, Jagat, Jiva, Ishvara, Jiva, Jagat and Ishvara. Whatever you have, any incompletion, any problems in life, anything that you have in life, you can alter it during this Chandragrahana Punyakala. As Sadashiva himself has laid down in the Agamas, he himself is this time going to prepare the Aushadha for all of us, infusing his own supreme state of consciousness, Mahasadashivoham, into each one of us. When that happens, when we are lifted, when our consciousness is elevated, happens. That's what Sadashiva said in the Kamikagama, which we shared before. Jnana Agnis Sarvakarmani Bhasmasat Kurute Kshanat. In one moment, you will be relieved out of whatever karma that you are suffering from. All that is needed is you need to be elevated to your higher self. Your consciousness need to be tuned to the ultimate state of Turiyatita. That happening, making that happen is what is called Aushadha, and that is very much prescribed by Sadashiva in the Agama, and Swamiji is going to prepare the Aushadha during this Chandragrahana Punyakala today. We heard about the rare occurrence today. We heard about
the Shivastra Maha Shanti Homa. We heard about the Aushadha preparation today. Coming to the most important ingredient of today's event. Yes, we are having an occurrence that's happening once in 150 years. We are having an occurrence of Shivastra Mahashanti Homa, which is a very unique Vedic ritual that happens. We are having the occurrence of the preparation of the Mahasadashivam Aushadha. But all this is also a common occurrence. There is one very unique occurrence which happens once in 4,000 to 5,000 years. The lunar trifecta happens once in 150 years. The Shivastra Mahashanti Homa, maybe it happens once in a few months, maybe in different temples, different rituals. Aushadha preparation may be very rare these days because nobody knows the science of creating that alchemy. Okay, maybe rare. You'll find one or two people here and there performing that Aushadha, making that Aushadha. But apart from all this, beyond all this, there is something very unique phenomena that happens once in 4,000 to 5,000 years, which is the happening of the avatar. The rarest phenomena today is not the lunar trifecta which happens, is not the blue moon, super moon. The rarest phenomena today is the happening of the avatar. A descent of that superconscious energy embodying itself in the human form, coming down to the planet Earth for the only one purpose, to give a conscious breakthrough to humanity. How a monkey has evolved to a man. Now is the time for a man to experience a superconscious breakthrough and experience himself as a divine superhuman, experience himself as Mahasadashiva himself. What happens when we are all sitting in the space of that rarest of the rarest phenomena, when we are in the space of the avatar? What actually happens? I wanted to give a scientific explanation first and then share what space that we need to be in to ensure all the doshas, the karmas get burnt, so we can manifest whatever reality we want to manifest in our life. But before that, I wanted to give a scientific explanation of what really happens in the presence of the avatar, whether you're sitting here and physically in Bengaluru Adinam, or you're joining us live on Facebook, wherever you are in any part of the world, or you're joining us on the two-way video conferencing from any of our centers. Understand, the science has recently discovered a beautiful phenomena called the effect of mirror neurons. What is mirror neurons? When you actually see someone swimming, for example, your friend is swimming in the swimming pool, you're standing outside and you're watching him, whatever the neural activity happens in your friend's neurons, by just watching him perform the act of swimming, that exact same neural activity gets mirrored in our brain also. This is the concept of mirror neurons. Your neurons in your brain are capable to mirror the neural activity of something that we see or something that we experience. Let's watch a beautiful documentary on this concept of mirror neurons, and then I'm going to come back again and explain how this mirror neurons, how we are all going to experience this phenomena of mirroring the neural activity today during the Aushadha process. A beautiful concept, and it explains us, understands scientifically also what we are going to experience in this unique night today. Vision team, please play the video on the mirror neurons. Gaze into a mirror, and what do you see? Well, I see my face, of course,
But in my face, I see moods, I see shifts of feeling. We humans are really good at reading faces and bodies, because if I can look at you and feel what you're feeling, I can learn from you, connect to you, I can love you. Empathy is one of our finer traits, and when it happens so easily, perhaps because, and this is brand new science, this is just out of the lab, we may have some special circuitry in our brains that helps us whenever we look at each other. Ask yourself, why do people get so involved, so deeply, deeply involved, with such anguish, such pain, such nail-biting tension over football? Cleveland Browns are gambling on defense. Why are we such suckers for sports? And it's not just sports. We can lose it completely at the movies, at video games, watching a dance. Is there something about humans particularly, that allows us to connect so deeply when we watch other people? Watch them moving, watch them playing, watch their faces. Well, as it happens, scientists have an explanation for this strange ability to connect. It's new. It had never been found on the cellular level before. A set of brain cells found on either side of the head. Among all the billions of long branching cells in our brain, these so-called mirror neurons have surprising power. What we found is the mechanism that underlies something which is absolutely fundamental to the way that we see other people in the world. And it began entirely by accident at a laboratory in the lovely old city of Parma, Italy, where a group of brain researchers was working with monkeys. And they were testing a neuron, that's a brain cell, that always made this sound, whenever the monkey would grab for a peanut. So the lab had all these peanuts around, and whenever the monkey made its move, the neuron would fire. Scientists thought, now here's a neuron that is essential to motion. It's a motor neuron. Then one day the monkey was just sitting around, not moving at all, just sitting, when a human scientist came into the lab, and when that scientist grasped the peanut, the monkey's cell fired. Now, the monkey hadn't moved. It was the human that had moved, suggesting that this neuron up here couldn't tell the difference between seeing something and doing something. Seeing and doing were the same. Or more intriguingly, that for this neuron, watching somebody do something is just like doing it yourself. The head of the lab, Giacomo Rizzolatti, thought, wow. The same neurons, one neuron, fire both when the monkey observes something and when monkey is doing something. It's almost unbelievable. It was surprising because this cell which was involved with motor planning for the monkey turned out to be interested in the movements of other people as well. Some people call them monkey see, monkey do neurons, but the name that stuck is mirror neurons, because with them, the brain seems to mirror the movements it sees. This accidental discovery got scientists thinking, doing more tests, and it soon became pretty clear that this is not just a monkey thing, it's a people thing too. We all know that humans learn by looking and copying. That's what infants do. First you look, then you do. Ready? Let's see your feet this way. And once you've watched and copied and learned a set of moves, you not only have them in your head. Look, you put your shoe on. Yeah, she brushed it. If you see somebody else doing it, you can share the experience. And you want to do it with me? They know the moves, you know the moves, so you can move with them. Wow. If you can use the years of training that you yourself have done, learning to crawl, then learning to walk, then learning to eat, this is an incredibly rich set of knowledge that you could apply to the problem of actually seeing what's going on. So that's why when I head down this street carrying all these packages, not only do people watch, look how they're watching. They feel my predicament, because they know what it's like to carry heavy packages. They all know about carrying. So as they watch me moving, they can feel themselves moving. Their neurons are mirroring the action.
the brain's way of translating what we see so we can relate to the world. The mirror system is the way that you tap into, the way that you harness your own abilities and project them out into the world. And people are really good at watching and translating what we see. Like with just 13 moving dots, that's all there are here, you'll have no trouble recognizing these very ordinary activities. What's more, tests have shown when a person sees a movie like this of his own movement, he'll recognize it immediately as his own. And that's why sports fans tense with the action and wince and leap, because if you know the game, then your neurons are firing as if it's you playing, giving a whole new meaning to the phrase armchair quarterback. That's why it's so easy to be a sports fan. But there is more, suggests UCLA professor Marco Iacoboni. He thinks mirror neurons tie us not just to other people's actions, but to other people's feelings. So the idea was to try to figure out how the emotional system and this motor system are connected together. You're going to go in the scanner. What you're going to do is to demonstrate, he put me into this very powerful fMRI brain scanner that can peer into the brain while it's working. And he gave me some goggles so he could show me pictures when I was in there. So you can see here the eyeball of Robert. And once he had a good view into my brain... Nice looking brain. Thank you. Robert, you're not supposed to talk when we scan you, all right? Sorry. Then he said, okay, I'm going to show you a bunch of faces. And for each face, I want you to imitate it. So I did that. Then he recorded my brain while I moved my facial muscles. We're going to do right away another one. Okay. Then he said, okay, same faces, but this time, don't move a muscle. Just look. So I looked. When we checked the results... Oh, there's my brain. I've never seen my brain before. This is your mirror area. Iacoboni says that the part of my brain that's working when I make a face, the busy when I see the face. Plus, when I was looking at these faces, I remember feeling extra uncomfortable, kind of bad. But when these faces came on, I felt better, almost happy. And in fact, at the moment I was looking at the happy face, my brain, and this is my brain, in that instant, see the red area here? It shows activity in the happy, emotional part of my brain. And when I was imitating happy faces, look, I get even a bigger response. This, says Iacoboni, is a consistent result. Mirror neurons, he believes, can send messages to the limbic or emotional system in our brains. So it's possible these neurons help us tune in to each other's feelings. That's empathy. We strongly believe that that's a unifying mechanism that allows people to actually connect at a very simple level. You're saying that there's a place in my brain whose job it is to live in other people's minds, live in other people's bodies. That's right. Oh, darling, I'm going to die. Don't let me die. Yeah. And great actors instinctively know that if they put feeling and drama into their bodies, Hold me tight. Don't let me go. their faces, It's dark out there and lonely. we will respond. Can't die. You're too brave to die. What actors are expert in is using their movements to inspire feelings in the people watching. These are the experts in the mirror system. We are intensely social creatures. We literally read other people's minds. I don't mean anything psychic like telepathy, but you can adopt another person's point of view. When you put it together, what do you think it's going to be? So if mirror neurons help us connect emotionally, what about people who have trouble with this? Kids like Christian, who has autism. Why do you like Legos? It's been known for some time that children with autism could be quite intelligent, but have a profound deficit in social interaction. There he is. Christian can speak and read and write, but like many kids with autism, he will avoid eye contact. He often misunderstands questions.
So, Christian, can you tell me what you did in school today? Doing well. You're doing well? Everybody wants to know what exactly causes this. So Dr. Ramachandran and his graduate student, Lindsay Schenk, designed an experiment. So we're going to be reading your brain waves with this cap. They recorded brain waves while the kids opened and closed their hands, and while they looked at a movie of somebody else's hands. For most people, the brain waves look the same either way, whether they're doing or seeing. But for kids with autism, the wave changes, suggesting possibly that autism may have something to do with broken mirror neurons. Their brains may indeed be different in that regard, and they may have deficits in the mirror neuron system. But we don't know this for sure yet, and additional work needs to be done using brain imaging. But what we do know, says Ramachandran, is that healthy human beings are intensely social. More than our cousins the monkeys, we invent ways to connect. We invent dances, and handshakes, and games to play. We eat together, we meet, and we talk. We talk a lot. Get away. Everybody's interested in this question. What makes humans unique? What makes us different from the great apes, for example? You can say humor, you're the laughing biped. Language, certainly. Okay? But another thing is culture. And a lot of culture comes from imitation, watching your teachers do something. And here V.S. Ramachandran makes a big leap. He has proposed that at a key moment in our evolution, this is his guess, our mirror neurons got better. And that made all the difference, he says, because once we humans got better at learning from each other, looking, copying, teaching, we could do things the other creatures couldn't. In other words, if you are a bear and suddenly the environment turns cold, you need a few million years to develop a polar bear type layers of fat and fur. It would take many, many, many bear generations to select for furrier bears. But, says Ramachandran, if you're a human, you watch your father slaying another bear and putting on a fur coat, skinning it, using that as a coat. You watch it, you learn it instantly. Your mirror neurons start firing away in your brain. And you perform the same sequence, complicated sequence. Instead of going through millions of years of evolution, you've done it in one generation. And while no one's claiming that mirror neurons are the key ingredient that makes us different from other creatures, what these neurons do suggest about us seems almost self-evident. You can see it any Sunday at a sports bar, that deep in our architecture, down in our cells, we are built to be together. There would be very little point in having a mirror system if you lived on your own. There'd be a lot of point in having a digestive system if you lived on your own. There'd be a good point in having a movement system if you lived on your own. There'd be a good point in having a visual system if you lived on your own. But there'd be no point in having a mirror system. The mirror system is the most basic social brain system. It's a brain system which there's no point in having if you don't want to interact or relate to other people. But we do like to interact, and maybe now, as never before, we will understand why. So if you saw did everyone understand the concept of mirror neurons? What actually happens in the neural activity of our brain? If it can be just as simple as watching a movie or watching a football match or watching somebody swimming, watching a monkey moving something, imagine the amount of mirroring that can happen in the neural activity of our brain when you are watching literally the superconscious energy embodied itself in the human form. That is what we call as the avatar. In Sanskrit, the word avatar comes from the root avatarati. Avatarati means
the descent. When the descent of that superconsciousness happens, that is what we call, that happening we call as the avatar. Now for those of you who are visiting the Adinam for the first time, or you are tuning live for the first time, you have not yet experienced what it is to be in the presence of an avatar. And today is going to be a very, very, very unique experience for you, because literally you will see, during the time that Swamiji arrives and when he is here preparing the Aushadha and for the Homa, blessing the humanity by conducting the Shivastra Maha Shanti Homa, you will literally see whatever space that he is in, whatever experience he is inserting into the Aushadha, the thought current that he is implanting into the Aushadha, all of you immediately will literally get sucked into that experience in no time. Beyond your ability to concentrate, beyond your ability to have this space to receive, beyond your any kind of a logic, suddenly you will see that your mind, your being, your brain, your system, your entire body, mind, being beautifully gets tuned in the same space as you are with the avatar. That is literally the effect of mirror neurons, where Swamiji's space of complete completion, that Swamiji's space of Nirvikalpa Samadhi gets literally mirrored in each and every one of you, whether you are physically here in Bengaluru Adinam or joining us on Facebook Live. That is why, more than the lunar trifecta which happens once in 152 years, the rare happening of the avatar happens once in 4,000 to 5,000 years. You don't know. When you are here having a human body, listening even about the avatar, even casually or scrolling through Facebook, suddenly you hear about the avatar, know very clearly the time has come for you to experience the superconscious breakthrough. Otherwise, there is no way you will hear about the avatar. Many people scroll on YouTube and suddenly Swamiji's videos pops up. You scroll on Facebook, suddenly his picture pops up. You scroll on Facebook, suddenly you see Nithyananda is live on Facebook and you're curious, you click it. Don't think it's a coincidence. In the cosmos, nothing is an accident. Everything is a beautiful happening. If you are one of those viewers who are here or who are watching us online, understand very clearly, it is a divine call for you to experience the superconscious breakthrough. And tonight, the most auspicious full moon night, even more auspicious because of the Chandra Grahana Punya Kala, the auspicious time of the lunar eclipse. And the most auspicious happening is the breathing space, the presence of the avatar. All of it is coming when you are in the human body, when you are in a having the sharira which can experience a superconscious breakthrough. Understand, only human beings are capable of experiencing superconscious breakthrough, because we have the Pratyagatma Chaitanya Jagrata, means the individual consciousness that we have, which has the ability to experience that superconscious breakthrough. No other body, no other being. Even they may be in Devaloka, they may be in Gandharvaloka, they may be in other planes, they have to take the human body to experience superconscious breakthrough. So we have the rarest of the rarest happening, the human body, the rarest of the rarest happening, the lunar eclipse. On the day of the full moon, the lunar eclipse happening, and the most rarest of the rarest happening, the presence of the avatar. So tonight, let's make use of all of these ingredients that is available today. And Swamiji, out of his utmost compassion for humanity, has made himself available to anyone out there in the world to experience that beautiful space, so all of you can experience tonight, if you decide, and sit in that space of deep devotion and gratitude. Just sit with having the inquisitiveness of a child. How a child is open to explore anything. You don't need to believe, you don't need to trust, you don't need to have any faith. Just sit with the inquisitiveness of a child. How when a child is given a toy, how it is excited to explore.
Just be excited and open to explore the possibility of a superconscious breakthrough. That is enough. Nothing else is required. Tonight you can experience a huge shift in your consciousness. With that, let's get into the auspicious Shivastra Maha Shanti Homa. The Homa has just begun here. So I request Sri Nithyananda Swami to share about what is happening, and we will actually be experiencing the Homa now, and very shortly Swamiji himself will be arriving here for the Aushadha preparation. Nithyanandam. Now the Shivastra Mahashanti Homas, preliminary rituals, which are the Vigneshwara Puja, Shuddhi Punya Havachanam are over. The Vigneshwara Puja is invoking Lord Ganesha's presence and worshipping Lord Ganesha to ward off all the negativity, all the obstacles. The Vedas and the Agamas mention that the obstacles happen in 3 levels. One is the obstacle, that disturbance that happens from your own self-hatred, self-doubt and self-denial. You decide something, you get and later drop your idea and get into confusions. All these kinds of obstacles, disturbances. The next kind of a disturbance is from the nature. You want to do some action, suddenly there is a hurricane, tornado, or it's too hot for whatever you want to do, or it is too windy, extreme continuous rain, like that. From the nature, whatever the obstacles that can happen, they are there. And the third level is the obstacles that manifest in your life, sourcing from your karmic baggage, and also those obstacles which are happening due to divine interventions. If suppose you are not in integrity with cosmic energy, some dimension of cosmic energy, suppose if you are missing integrity in one part of life continuously, and you speak lies in some place, in some other, and you achieve whatever you want to achieve in some other point of time, at some other point of time when you want to do something, cause something in your life, at that time the effect of this karma comes and hits you. So the divine intervention comes and stops you because of the karmic influence. To remove all these 3 kinds of obstacles, we perform the Vigneshwara Puja, the worship to Lord Ganesha, and followed by that we always perform the Swasti Punyaha Vachanam, meaning invoking Lord Varuna, the god of water element, Varuna, into the Kalasha. Kalasha is a sacred water pot in which mango leaves and the coconut are kept, and which are onto which the threads are tied. That represents the body, that becomes the body of Varuna. Invoking Varuna, the god of water, into the Kalasha, invoking the Varuna's presence and performing puja to Varuna and chanting the Punyaha Vachanam Pavamana Suktam. By doing that, any inauspiciousness that is about to happen is also cleared off, meaning any inauspiciousness which is because of the time and date. If there is some specific ritual or certain action that needs to be performed, for that there is an obstacle, the time is not conducive, so that dosha is also removed from the Punyaha Vachanam, and after the
Punyahavachanam, the water from the kalasha are sprinkled on everyone, so that the people, and thereby purifying all the people around, and also all the priests who are performing the puja, and all the materials that are used for the puja and homa. This is the Swasti Punyahavachanam. Once this is done, the priest prepares himself for entering into the puja by doing antaryaga and bhuta, cleansing the basic units of life. And they worship, they invoke all the energies in their body and cleanse the basic units. The body, physical body, is made of 5 elements. The basic 5 elements are either water, fire, earth, air. The cleansing the basic units itself, that which make their physical body, thereby making their body also pure before entering into the puja. That is what is currently happening.
Nithyananda. Nithyananda. As we get ready for the sacred Sankalpa to begin, I just want to share this is such an exciting event, not only for those of us who are physically here in Tirukaya, but also for those of you who are blessed to tune in and see this happening from all over the world. Actually, the last time Aushadha was prepared during the Mahasadashiva program, Swamiji shared with us, while the Agni is alive, meaning once the auspicious superconscious energy that is also self-aware is infused into fire, into Agni, that time it's not just mere matter. Agni, that fire, is actually a living, conscious, reciprocal being. See, in Sanatana Hindu Dharma, when a deity becomes a deity, it's when the statue has the intelligence infused into it, that superconscious energy. What makes the Homa so special, Agni, fire, is infused with self-aware energy that gives a tremendous blessing. Swamiji was explaining to us during the previous Aushadha process, when Agni is alive like this, and we're connecting this energy with the Homa, holding our intention, even for someone on the other side of the world to catch a glimpse of that flame, of that fire, it's a tremendous blessing in their life. He had asked us how many people had seen that Aushadha. And so I gave the feedback for how many people were watching. How many people were actually tuned in and engaged, seeing the live happening. He actually said that number is not as significant as the number of people who, while scrolling through their news feed, just catch a glimpse of the Aushadha. Those of us who heard this were a little bit shocked, because typically when someone talks about a social media strategy, the goal in that strategy is what? Get a subscriber, get a viewer, get someone really to engage with the content. Swamiji said it's not about promotion, it's not about getting someone to engage, it's about blessing more and more beings. Those people who just see the Aushadha being prepared, or the Homa, just like this one, the Shiva, Astra, Maha, Shanti, Homa. What a powerful energy it is, especially during this rare celestial lunar trifecta. So what I want to share, those of you who are seeing this online, or those of you who have an online connection with you here now, this event is going live on the Paramahamsa Nithyananda Facebook page, as well as the Twitter account at Shri Nithyananda, as well as the YouTube channel Nithyananda. On all of these platforms, I highly recommend you not only like and comment on the Aushadha that's happening, on this beautiful Homa, but also share it so that your friends, your followers, your relatives, those with whom you are connected on social media, can catch a glimpse and receive this blessing. Very sweetly, a number of our viewers on the Paramahamsa Nithyananda Facebook page have left some comments. I see people asking Swamiji, please bless their family with health, wealth and happiness. Please bless them to overcome their negative karmas. Some are asking for the ill effects of their astrological alignments to be cleared, the doshas, for financial abundance. Like this, it goes on and on and on. I just want to reassure everyone here, if you've asked Swamiji to bless you,
with health, with wealth, with a pleasant relationship, to heal yourself or to heal one of your relatives, one of your loved ones, whatsoever you may be asking Swamiji, understand, just by watching tonight live, during this powerful transformational time period, when you connect with this energy, the rare living avatar, Mahasadashiva himself, who is here in form, will surely see to it that your intention becomes a reality. Asking Swamiji in the comments, of course that's good, he will bless you. Through all his 1,000 heads, he'll be seeing your comments and showering you with blessings. But when you decide to be more than just someone asking him for a blessing, when you make the decision to be a source through whom he can bless others, I'm telling you from my personal experience, that becomes the sweetest connection you can have with him. How many of you here, Bala sons of the Nithyananda Gurukul, Adi Navasis, people who are in the Sanya Sampradaya, how many of you have felt that when you stand and make a decision to share for Swamiji what he is bringing to the world, you get even closer than if you're just enjoying it for yourself? Yes, I'm seeing a lot of hands going up, scattered throughout here at Tirukailayam courtyard. It's true. See, Swamiji said once, he's here for the super conscious breakthrough of the entire planet. Not only of the entire planet, of the entire multiverse. Blessed to be here right now. I see a few hundred, maybe a few thousand, very blessed beings. Maybe more than a few thousand, because of course celestially we're joined by many who we can't physically see with the two eyes. But if you've been initiated into third eye awakening by Swamiji, you'll see that they're also around us. Physically here, there might be a few thousand. But how many human beings are alive in body on planet Earth at this auspicious time? Around 7 billion, right? When we know that it's Swamiji's mission to give the super conscious breakthrough to everyone, let's do everything in our power to make that vision into a reality. Make his vision our vision. Make his mission our mission. So please take a moment to soak in the sacredness of the blessings you're receiving here during this beautiful auspicious night. And also make a decision now to be a source of blessings for your online friends, your relatives, your followers. Just share this live link. I'll repeat again. We're live on the Paramahamsa Nithyananda Facebook page, on the @Shri Nithyananda Twitter account, and also on the Nithyananda YouTube channel. And of course, Nithyanandam to everyone who's seen us live. I also saw a question from somebody who's tuned in for the first time on Facebook. She's asked, what is this? Actually, that's one of my favorite comments to see. That means there's someone connecting for the very first time with this sacred energy. To answer your question, as Manyanatma Swami and Sri Ambananda Swami were sharing just earlier when we began this sacred event, there's a rare lunar trifecta happening right now. It's a blood moon, which means the radiation of the sunlight through Earth's atmosphere is coloring the moon a reddish orange. It's also a blue moon, which isn't about the color blue. It means this is the second full moon in this calendar month. On top of that, it's a supermoon, which means the moon and the planet Earth are closer together than usual, making the moon appear huge, gigantic in the night sky. Not only it's a trifecta, I guess it's a quadrant, because on top of this, it's also a total lunar eclipse. Very soon, that total lunar eclipse is going to start. This event is so cosmically rare that it creates a window of divine opportunity in which we can drop our doshas, our negative cosmological influences. In our astrology chart, some planets and some signs will work harmoniously together. Others will be diametrically opposed to each other. The moment we're born,
the alignment of those stars immediately takes effect on our lives. How we internalize the world around us, how we see ourselves, how we see others, how we connect with Mahadeva, Guru, Swamiji, how we sometimes avoid. All of this is influenced by our astrological chart. During a time like tonight, we can go beyond any negative influence in the chart. And how to go beyond that negative influence? That's exactly what the Homa that's now being performed and the Aushadha, which Swamiji himself is going to create, is for. Not only going beyond those negative astrological influences, but also deciding what we want. See, if we felt that there's some kind of a pattern in life that we wish to drop, or if we feel that there's something happening against our will, something that we can't figure out why it's going on, but we don't want it to go on anymore, that moment, instead of just dropping what we no longer desire, we can also declare the reality we want to create. While this Homa is happening, the sacred Vedagamic fire ceremony, and while the Aushadha is being prepared, the Siddha medicine, that is not only there for the health of the body, but also to bring a new cognition into the being. While that's being prepared, whatsoever you declare you're going to drop will just melt out of your life. And whatsoever you declare you're going to imbibe, live, experience, whether that's health, wealth, positive relationships, success, friendships, or super conscious break by connecting with the living avatar, whatever it might be, any work you do towards it will be magnified a millionfold. So enjoy this sacred energy, share it with all of your friends and online followers, and be ready, because the moment Mahasadashiva himself in form enters here, when Swamiji enters, we will all feel an energy explosion in the best possible way. So if you're seeing this online, stay tuned, because you're about to see something stunningly beautiful that will change your life for the best. Nithyanandam. Nithyanandam. I now request the vision team to show the sacred bath, the Abhishekam happening to the Astra Deva. Nithyanandam, currently you are witnessing the Abhishekam, the sacred bath to Astra Deva. This is the weapon, the Astra of Lord Sadashiva. Now, as per the Agamic injunction, the Abhishekam, Astra Abhishekam is happening. Once the Astra Abhishekam is over, the Tirthavari, the dipping of the Astra Deva into the sacred water, and will be happening, followed by which the water into which the Tirtha, the sacred water into which the Astra Deva was dipped, immersed, will be sprinkled on all of us here in Bengaluru Adinam. That will count as the snana that Lord Sadashiva mentions, which is to be done during the Grahana Punya Kala. 7 o'clock, 7 p.m. Indian Standard Time, the Madhya Kala, the Grahana Madhya Kala, which is the peak of the eclipse time, happens. The mid of the eclipse time happens. Once the peak is achieved, we will enter into the second half of the eclipse. During the second half of the eclipse time, as per the Agamic injunctions,
we need to take either full body bath or sprinkle sacred water on all of us, thereby relieving ourselves from the dosha, the Mahasparsha dosha, which happens because of the rays that fall on all of us from the moon today. When here now we have along with us we are now indeed very glad to introduce the head of the Agamic Studies of Nithyananda University, Shiva Shri Somashekara Shivacharya today, who is also the Sarvasadhaka of the Shivastra Maha Shanti Homa. Shiva Shri Somashekara Shivacharya will be now explaining to us the significance of the Astra Abhishekam as per the Agama. Shiva Shri Somashekara Shivacharya will be explaining about the significance of the rituals that are happening here in Tamil, and I will be explaining, translating the same in English for all of us. Om Shivam Shivam Shivasutau Shiva Bhaktan Shivadiman Asmadacharya Paryantan Guru Varyan Natosmiham. Ladies and gentlemen, I am very glad to participate in this function. Today is the holy day for us. In this function, now they are doing Shivastra Abhisheka. In that Shivastra, 3 Tattvatrayas and Devatatrayas, all Devatas inside of the Trisula. We worked the Nava Nadi Devatas in Nayan Kumbhas, Gangecha Yamune Chaiva, Godavari Saraswati, Narmada Sindhu Kaveri Sona, Bhadracha Tathaivacha. We worshipped Nava Nadi Devatas in the Kumbha. In the Grahana Punya Kalatala Muru Nilavana Chandiranukum
உபக்கிரகம் என்று சொல்லக்கூடிய ராகுவுக்கும் தொடர்பு ஏற்பட்டு மறைக்கின்ற பொழுது அந்த ஒளிக்கதிர்கள் பூலோகத்திலே எல்லா பிராணிகளிடத்திலும் எல்லா மக்களிடத்திலும் தொடுவதனாலே மகாஸ்பர்சம் என்ற ஒரு குறை ஏற்படுகிறது. அந்த மகாஸ்பர்சம் என்கின்ற தோஷத்தை போக்குவதற்காக இந்த புனிதமான இந்த ஸ்பெஷல் டைம்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஹோலி டைம், இந்த புண்ணிய காலம், அந்த புண்ணிய காலத்துல ஸ்நானம், தானம், ஹோமம், யஜனம், உபதேசம் முதலான உயர்ந்த கர்மாக்கள் அவற்றையெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்று சாஸ்திரங்கள் சொல்லுகிறது. காரணாகமா சேஸ் சர்வ பிரஜானாம் பூலோகே மகாஸ்பர்ஷோ விதீயதே தத்தோஷ சமனார்த்தாய ஸ்நானம் தானம் ஜபம் யஜேத். Yajat means we worship. We do the worship. So Swamiji organized this function very gratefully as per Agama. I am very grateful to Swamiji. This today is an important day for all of us because of the lunar eclipse that is happening today. During this lunar eclipse, the Papa Graha, the shadow planet or Rahu, engulfs moon, and the rays which are diffracted and which are passing through the sides of the moon fall on the planet Earth and creating the dosha called Mahasparsha. In order that we all be relieved from this Mahasparsha dosha, Sadashiva, with so much of compassion, explains the ways that we can get out of this dosha and also utilize this time as an auspicious time and receive multiple manifold benefits in our lives. Sadashiva, as per the Agamas, which are Sadashiva words, Swamiji has organized for the Shivastra Maha Shanti Homa. Shiva Shri Rajivacharya expressed his gratitude for being a part of this. இந்த மகா சாந்தி யாகம் செய்யப்படுவதனாலே என்ன பயன்கள் ஏற்படுகிறது என்கின்ற பொழுது ஆகமங்கள் இது போன்றதான் யார் ஒருவர் செய்கிறார்களோ அவர்கள் எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுபடுகிறார்கள், எல்லா விதமான நோய்களிலிருந்தும் விடுபடுகிறார்கள், எல்லா விதமான பாபங்களிலிருந்தும் விடுபடுகிறார்கள் என்று சாஸ்திரங்கள் சொல்லுகிறது. That was the benefit of this function. At first says Shiva in Karanagama, Evam yak kurute martyaha sarva papai pramuchyate.
ధ్వకేశకం ఖడ్గకేటక నారాచ ధనుసూత్రకమండలం తిం త్రిశూలం పరశుం బ్రహ్మదండకరాన్వితం ధ్యాత్వా పాశుపతం దేవం సాంగం సంపూజయేద్బుధః. ఓం తన్మహేశాయ విద్మహే వాగ్విశుద్ధాయ ధీమహి తన్న శివః ప్రచోదయాత్. ஓம் சிவாய நமஹ. இப்பொழுது இந்த புண்ணிய தீர்த்தாபிஷேகம் நடைபெற்றிருக்கிறது. இந்த புண்ணிய தீர்த்தங்களை எல்லாருக்கும் தலையில தெளித்து கொள்வார்கள். இது புண்ணிய கால ஸ்நானத்திற்காக தெளிக்கப்படுகிறது. பிறகு சாந்தி கும்ப தீர்த்தம் முடிவிலே தெளிக்கப்படும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஓம். Now, because the japa, homa, puja, whatever we are doing has to be done with austerity, and now we are starting the japa, special Pashupadastra, Astra mantra, Shadakshari mantra japa, Samhita 11 mantras, and Shiva Panchakshari mantras, Shanti mantras. We are starting the chanting. Om. As we said, because we need to perform all these special pujas during the special time of the eclipse with yama and niyama, we need to keep ourselves empty stomach. Sacred water which was offered as abhishekam to Manyanatma Swami. Can you please come? Here the prokshana of the
Shivastra. The Astra Deva Abhishekam, the water from the Abhishekam is being sprinkled on all the Adinavasis, Gurukul Balasans and all those who are here physically in Bengaluru Adinam. Okay. Please play some music. Shri Rudradyaya Prashna
நந்திரு ஞாலம் மல்கிய நாரையூர் நம்பனுக்கு ஞாலம் மல்கிய நாரையூர் நம்பனுக்கு ஆல நீழலும் அம்ம அழகிதே சூலம் மல்கிய கையோம் சோடரோடு பாலும் நெய் தயிர் ஆடிய பான்மையும் ஞாலம் மல்கிய நாரையூர் நம்பனுக்கு ஆல நீழலும் அம்ம அழகிதே சூலம் மல்கிய கையும் பண்ணினான் மறை பாடலோடு ஆடலும் பண்ணி நான் மறை பாடலோடு ஆடலும் எண்ணிலாபுரம் மூன்றெறி செய்தலும் நன்னினார் துயர் தீர்த்தலும் நன்னி நார்த்துயர் தீர்த்தலும் நாரையூர் நன்னி நார்த்துயர் தீர்த்தலும் அண்ணலாலுன்னை ஆலன்வதனிகள் அம்ம அழகிதே நன்னே நார்த்துயர் தீர்த்தலும் நாரையூர் அண்ணலார் செய்கை அம்ம அழகிதே சூலம் மல்கிய கையோம். சிவா திருச்சிற்றம்பலம். சூலம் படை சுண்ணம் போடி சாந்தம் சுடு நீரு சூலம் படை சுண்ணம் போடி சாந்தம் சுடு நீரு பாலம் மதி பவழச்சடை முடிமேலது பண்டை
பாலம் மதி பவளச்சடை முடிமேலது பண்டை காலனோடு காலின் வலி காலனோடு காலின் வலி போற்றி கடிகமழும் நீலம் மலரு பொய்கை நின்றி யூரின் நீலையோர்க்கே நீலம் மலரு பொய்கை நின்றி யூரின் நீரை யோர்க்கே ஏ உண்ணாமூலை உமையாளோடும் உடனாகிய ஒருவன் பெண்ணாகிய பெருமான்மலை திருமாமணி திகழ மண்ணார்ந்தன அருவி தீரள் மழலை முழவதீரும் அண்ணாமலை தொழுவார் வீணை அண்ணாமலை தொழுவார் வீணை வழுவா வண்ணம் அருமே பூவார் மலர் கொண்டடியார் தோழுவார் புகழ்வார் வானோர்கள் மூவார் புறங்கள் எரித்த அன்று மூவர் கருள் செய்தான் தூமாமழை நின்றதிர வெறுவி தொருவில் நிறையோடும் ஆமாம் பிணைவள் தனையும் சாரல் அண்ணாமலையாரே எனைத்தோரூழி அடியார் ஏத்தும் இமையோர் பெருமானாறு நினைத்து தொழுவார் பாவம் நீக்கும் நிமலர் உரை கோயில் கனத்த மேதி காணாது ஆயன் கைமேல் குழல் ஊத அனைத்தும் சென்று திரளும் சாரல் அண்ணாமலையாரே அனைத்தும் சென்று திரளும் சாரல் அண்ணாமலையாரே திருச்சிட்டம்பலம். நித்யானந்தம் பரமசுகதம் கேவலம் ஞானமூர்த்திம் நந்த்வாதீதம் ககனசதிருஷம் தத்வமஸ்யாதிலக்ஷ்யம் ஏகம் நித்யம் விமலமச்சலம் சர்வதீ சாட்சிபூதம் भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि नित्यानन्देश्वर सदाशिवसमारम्भां नित्यानन्देश्वर्यादिशक्तिमध्यमां नित्यानन्दपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां ललाटे त्रिपुण्ड्रीनितिलकृतकस्तूरीतिलकः मालाधारस्फुरितकटिकौपीनवसनः दधानो दुष्टारं शिरसि फनिराजं शशिकलां प्रदीपः सर्वेषाम् अरुणगिरियोगी विजयते नमोपात्ता समस्ता दुरितक्षयद्वारा श्रीसद्गुरुप्रीत्यर्थं
अद्य पूर्वोक्त एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभदितो सारा गोल्ब्लाट् नाम्याः किम गोल्ब्लाट् नामधेयस्य जोश गोल्ब्लाट् नामधेयस्य हैना गोल्ब्लाट् नाम्याः एमा गोल्ब्लाट् नाम्याः जेसी गोल्ब्लाट् नाम्याः मार्शा रात् नाम्याः रेखा रात् नाम्याः सकुटुम्बस्य मीना जोशी नाम्याः रूपेन्द्र जोशी नामधेयस्य गिरीश जोशी नामधेयस्य रूपा जोशी डैनर नाम्याः सकुटुम्बस्य मानित्य समर्पिणी नाम्याः डेविड बाशम नामधेयस्य ग्रेगरी बाशम नामधेयस्य हैरी बाशम नामधेयस्य सकुटुम्बस्य मा कलादेवी आनंदा नाम्याः तू मैया अनीवा कार्बोन कुर्तिस् नाम्याः सकुटुम्बस्य ली योंग ई नामधेयस्य ली हॉन्ग शुआंग नामधेयस्य नुंग चिंगमन नाम्याः ली मैंगी नाम्याः ली यी हेंग नामधेयस्य हुई यू चोंग नामधेयस्य हुई याई ज़ोन नामधेयस्य सकुटुम्बस्य पुष्य नक्षत्रे जातस्य रोश रॉय नामधेयस्य श्रवण नक्षत्रे जातस्य रंजा रॉय नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे जातस्य रूपेश रॉय नामधेयस्य सकुटुम्बस्य जास्मिन कौर नाम्याः ओहार कॉर्कस नामधेयस्य नाजल कॉर्कस नामधेयस्य यासी कॉर्कस नाम्याः सकुटुम्बस्य प्रियदर्शिनी चक्रवर्ती नाम्याः वस्तव गोत्रोद्भवायाः कुंभराशो जातायाः प्रियदर्शिनी चक्रवर्ती नाम्याः पूरा भाद्रपद नक्षत्रे जातस्य चरन् नामधेयस्य सकुटुम्बस्य सुप्रजा मोहन नाम्याः मोहन जयराम नामधेयस्य वासुकी मोहन नाम्याः स्वाति राजशेखर नाम्याः राजशेखर पेन्कोटा नामधेयस्य बालकृष्णन जयराम नामधेयस्य सकुटुम्बस्य अमनदीप सिंह बैन्स नामधेयस्य राजपल सिंह बैन्स नामधेयस्य नरिंदर कौर दरिवाल नाम्याः बलबीर सिंह बैन्स नामधेयस्य संदीप बैन्स नामधेयस्य अमरदीप बैन्स नामधेयस्य सकुटुम्बस्य निर्युल्ल गोत्रोद्भवस्य जातायाः लीला कास्ट नाम्याः क्रिस्टियन थंडर हॉक वार्ड नामधेयस्य रामकृष्ण कास्ट नामधेयस्य मदना कास्ट नाम्याः ली कास्ट नामधेयस्य अंजलि वार्ड नाम्याः रवि तेजा अभिनेनी नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे तुलाराशो जातस्य विजय वेंकट तेज नामधेयस्य मूला नक्षत्रे धनुर्राशो जातायाः ऐशनी शक्ति तेज नाम्याः रेवती नक्षत्रे मीनराशो जातस्य विजय बाबू नामधेयस्य दसनल्ल गोत्रोद्भवायाः शुभराव अल्टूरी नाम्याः कृपावती अल्टूरी नामधेयस्य सकुटुम्बस्य संकृति गोत्रोद्भवस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे जातस्य राधा विश्वनाथन् नामधेयस्य अश्विनी गोत्रोद्भवायाः हर्ष नामधेयस्य सिद्धार्थ नामधेयस्य आदित्य नामधेयस्य मुरली विश्वनाथन् नामधेयस्य पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रे जातस्य मुरली विश्वनाथन् नामधेयस्य सकुटुम्बस्य रघु नारायण नामधेयस्य भविक रघु नामधेयस्य नव्या रघु नाम्याः लक्ष्मीदेवी नाम्याः राधा नाम्याः युगाली नाम्याः सकुटुम्बस्य रेबेका रात नाम्याः एलेक्स रात नामधेयस्य एबी रात नाम्याः सारा गोल्ब्लाट नाम्याः मार्शा लिलियन रात नाम्याः सकुटुम्बस्य महादेव दाजी फाड़के नामधेयस्य मलती महादेव फाड़के नाम्याः रजनी मनोहर चक्रडियो नाम्याः स्वाति मिलिंद फाड़के नाम्याः नूपुर मिलिंद फाड़के नाम्याः मिलिंद महादेव फाड़के नामधेयस्य सकुटुम्बस्य ब्रूस नामधेयस्य लौरा नाम्याः गुलियर्मो नामधेयस्य सॉसरो नाम्याः रैक्वेल नाम्याः गुलर्मिना नाम्याः
एड्वार्डो नामधे यस्य लिलिया नाम्याः इर्मा नाम्याः आलेक्स् नामधे यस्य मरियो नामधे यस्य कर्ला नाम्याः मारियाना नाम्याः सोफिया नाम्याः नतालिया नाम्याः मेलिसा नाम्याः अलेक्सा नाम्याः ऐटना नाम्याः डूल्स् नाम्याः लुपिता नाम्याः एंटोनियो नामधे यस्य कार्लोस् नामधे यस्य जेम् नामधे यस्य देयनिरा नाम्याः हेक्टर नामधे यस्य लुइस डेविड नामधे यस्य इलिया नाम्याः रुडोल्फो नामधे यस्य अलिशिया नाम्याः सिल्विया नाम्याः रुडोल्फो जूनियर नामधे यस्य लव्स नाम्याः मलिना नाम्याः हैमलेट नामधे यस्य पेट्रिशिया नाम्याः सकुटुम्बस् मारियाना एलिना नाम्याः मारियासला नाम्याः मारिसला नाम्याः अर्मांडो नामधे यस्य सकुटुम्बस्य निकोलस् नामधे यस्य क्रिस्टिना नाम्याः विक्टोरिया नाम्याः वलेरिया नाम्याः सकुटुम्बस्य चौ किम चियोंग नामधे यस्य कैरी चौली मी नाम्याः सिम सोंग होक नामधे यस्य चो पुई योंग नाम्याः खूबी क्वान नाम्याः बयन गान एंकियान नामधे यस्य उइजीन गान एंकियान नामधे यस्य सकुटुम्बस्य सौम्या नाम्याः वेंकैया चौधरी चेरुकुरी नामधे यस्य सौम्या चेरुकुरी नाम्याः साई श्रीवल्ली नाम्याः गोपालकृष्ण चेरुकुरी नामधे यस्य आशा चेरुकुरी नाम्याः ललित चौधरी चेरुकुरी नामधे यस्य सकुटुम्बस्य मिग्सू यिंग नाम्याः क्लोई चेन लिरोंग नाम्याः वोंग क्यान लोंग नामधे यस्य टियो ग्वाख्वा नाम्याः मिग आख्वा नामधे यस्य सकुटुम्बस्य शिबु रजनी बालन नाम्याः बालन परयिल नामधे यस्य रजनी बालन नाम्याः प्रिया शिबु नाम्याः सर्वणा शिबु नामधे यस्य सरयु शिबु नामधे यस्य प्रिया सुभाष रजनी बालन नामधे यस्य सुनीता रजनी बालन नाम्याः निम्मी रजनी बालन नाम्याः सकुटुम्बस्य दैविका नाम्याः संतोष नामधे यस्य बेंजामिन नामधे यस्य आरन नामधे यस्य एलिजबेथ नाम्याः स्टीवन नामधे यस्य सकुटुम्बस्य आइटु जॉनी तामा नामधे यस्य डायमंड तामा नामधे यस्य एस्टर तामा नाम्याः सकुटुम्बस्य भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य मीना नक्षत्रे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रे मीनराशौ जातस्य विकास नामधे यस्य पुनर्वसु नक्षत्रे मिथुनराशौ जातायाः स्वाति नाम्याः पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रे कुंभराशौ जातस्य अयांश नामधे यस्य उत्तराषाढ़ नक्षत्रे धनुर्राशौ जातस्य सरायाना नाम्याः मघा नक्षत्रे सिंहराशौ जातस्य बिम्लेश नामधे यस्य उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रे मीनराशौ जातस्य जय किशन शर्मा नामधे यस्य सकुटुम्बस्य अलेक्सांड्रा रौबिनी नाम्याः डैनियल रौबिनी नामधे यस्य ओवेन रौबिनी नामधे यस्य सोफिया रौबिनी नाम्याः विंस्टन नामधे यस्य सकुटुम्बस्य साय लक्ष्मी मंडगोंडी नाम्याः राजेश्वरी वोगटी नाम्याः आद्या मंडगोंडी नाम्याः शैलक्ष्मी हिमप्रिया मंडगोंडी नाम्याः रमदेवी घनकोटा नाम्याः साई सोमनाथ वोगटी नामधे यस्य वेंकट श्रीहर्ष मंडगोंडी नामधे यस्य राजेश्वर राव घनकोटा नामधे यस्य पद्मावती वोगेटी नाम्याः सकुटुम्बस्य गौतम घोष यस्य सुविधा घोष नाम्याः परुल घोष नाम्याः शुभ्रा मंडल नाम्याः अभिषेक मंडल नामधे यस्य आलोक कुमार मंडल नामधे यस्य सकुटुम्बस्य अखिल कड़ो नामधे यस्य अनिशा कड़ो नाम्याः अर्चना कड़ो नाम्याः विजयलक्ष्मी कड़ोली नाम्याः रमेश कोडाली नामधे यस्य
लक्ष्मणराव पवुलुरीनामधेयस्य नारायण पवुलुरीनामधेयस्य पिच्चम्मा पवुलुरीनाम्याः विष्णुभारत पोसनीनामधेयस्य राधाकृष्ण पोसनीनामधेयस्य चामुण्डेश्वरी पोसनीनाम्याः सकुटुम्बस्य आशारामराज सुखदियो नाम्याः राजेन्द्र सुखदियो नामधेयस्य प्रदीप सुखदियो नामधेयस्य सांजीव सुखदियो नामधेयस्य राजीव सुखदियो नामधेयस्य सुखदये सीचरन् नाम्याः सकुटुम्बस्य बालाजी श्रीनिवासन नामधेयस्य राधास्वामी नाम्याः श्रीनिवासन कुमांडोर नामधेयस्य अनुषा गुप्ता नाम्याः सूर्या गुप्ता नामधेयस्य लीला गुप्ता नाम्याः सकुटुम्बस्य राहुल असानी नामधेयस्य चंद्रा असानी नाम्याः अशोक असानी नामधेयस्य पिंकी असानी नाम्याः अश्विन असानी नामधेयस्य समांता असानी नाम्याः सकुटुम्बस्य प्रवीण रत्न फोर्टडो नामधेयस्य मीना सुरेश जग्रिया नाम्याः आर्यन फोर्टडो नामधेयस्य आस्था फोर्टडो नाम्याः सूरज असार नामधेयस्य मुकुल जगारिया नामधेयस्य सकुटुम्बस्य अरविंद नारने नामधेयस्य हिमबिंदु नारने नाम्याः ऐश्वर्या नारने नाम्याः रमेश नारने नामधेयस्य माधवी नारने नाम्याः गौतम नारने नामधेयस्य सकुटुम्बस्य आकाश चुक्कबल्ली नामधेयस्य सुरेश चुक्कबल्ली नामधेयस्य मधुमती चुक्कबल्ली नाम्याः अविनाश चुक्कबल्ली नामधेयस्य भवना चुक्कबल्ली नाम्याः सकुटुम्बस्य शिवप्रसाद विश्वास नामधेयस्य अनुराधा विश्वास नाम्याः मेलनी एन विश्वास नाम्याः लाला विश्वास नाम्याः सकुटुम्बस्य हरीश हाडली नामधेयस्य लता हाडली नाम्याः राजप्पा नामधेयस्य शैलजा राजप्पा नाम्याः हन्वित नामधेयस्य नटराज गौडर नामधेयस्य सकुटुम्बस्य गुरजिंदर कौर नाम्याः नरिंदर को नाम्याः सुखजिंदर को नाम्याः सरतज नामधेयस्य सकुटुम्बस्य रमेश पटोलिया नामधेयस्य शाहिल नामधेयस्य सहिती नाम्याः किन्नारी नाम्याः संजीवनी नाम्याः प्रभा नाम्याः सकुटुम्बस्य यश्विन लक्तार्या नामधेयस्य हिरण्या लक्तार्या नाम्याः योगेन्द्र आश्ली नामधेयस्य हेमलता राठौड़ नाम्याः भास्कर राठौड़ नामधेयस्य इसिता शाह नाम्याः नीता शाह नाम्याः वल्सूर नाम्याः सकुटुम्बस्य पुष्या नक्षत्रे नित्यानंद गोत्रोद्भवायाः पुष्या नक्षत्रे जातायाः प्रेमा कोडंदरामन्नाम्याः मेषराशौ जातायाः जातस्य कुमार स्वामीनाथन नामधेयस्य चित्रा नक्षत्रे तुलाराशौ जातायाः पूजा कुमार नाम्याः ज्येष्ठा नक्षत्रे मिथुनराशौ जातायाः दिव्या कुमार नाम्याः सकुटुम्बस्य उमा नाम्याः इंगर नाम्याः सकुटुम्बस्य नान्सी ओ कैरोल नाम्याः किम्बर्ली कीलर नाम्याः कियारा केसी नाम्याः जेसन कीलर नामधेयस्य लूकस कीलर नामधेयस्य सकुटुम्बस्य स्पेन्सर ओकाम्पो नामधेयस्य मेलोय ओकाम्पो नाम्याः पाउलो ओकाम्पो नामधेयस्य ईशा ओकाम्पो नाम्याः मरिया ओकाम्पो नाम्याः लोर्डस नवारो नाम्याः सकुटुम्बस्य स्वेन रीव नामधेयस्य शिनोव नोर्डस नाम्याः स्टीन रीव नाम्याः सॉल्वी रीव नाम्याः स्विंग्युंग
नामधेयस्य कैटो ग्रिम्स्मो नामधेयस्य सकुटुम्बस्य अनिमेष नामधेयस्य मीनू नाम्याः नैन् नामधेयस्य रीना नाम्याः गीता नाम्याः मोहिन्दर नामधेयस्य सकुटुम्बस्य डैनी टैंग नामधेयस्य स्यूबिंग टैंग नामधेयस्य नवीन टैंग नाम्याः सकुटुम्बस्य मोहन नामधेयस्य रेखापाठक नाम्याः नरहरि नामधेयस्य चार्ल्स नामधेयस्य सकुटुम्बस्य अर्जुन चौहान नामधेयस्य कुरन चौहान नामधेयस्य सुमन चौहान नाम्याः अजित चौहान नामधेयस्य सकुटुम्बस्य परवीन बंडन नाम्याः मैथ्यू हाल्डर नामधेयस्य माया हनु हाल्डर नाम्याः गुरदीप कौर बंदन नाम्याः जसपल सिंह बंधन नामधेयस्य मार्गरेट हाल्डर नाम्याः टेरी हाल्डर नामधेयस्य जेफ्री हाल्डर नामधेयस्य सकुटुम्बस्य लिंकन अरास्मो गार्सिया मेंडेस नामधेयस्य मरिया जियोवाना मेजा नाम्याः जियोवाना अलेक्जेंड्रा गार्सिया मेजा नाम्याः मायरा मार्टिनस नाम्याः गिल्बर्टो वेगा नामधेयस्य मिखेला रेबेका रोब्लेस नाम्याः सकुटुम्बस्य लॉरा नाम्याः ब्रूस नामधेयस्य बुलिरेमो नामधेयस्य सोकोरो नाम्याः राक्वेल नाम्याः सकुटुम्बस्य शिवा बेल नामधेयस्य अशोक बेल नामधेयस्य मानित्य विश्वेश्वरानंदा नाम्याः श्रीनित्य ब्रह्मस्वरूपा नामधेयस्य सकुटुम्बस्य प्रमोद अय्यर नारायण नामधेयस्य गीता नारायण नाम्याः अनंत नारायण नामधेयस्य सकुटुम्बस्य पून च्यू डेविड नामधेयस्य लाम वाइन विविन नाम्याः पून ही लाम हेली नाम्याः पून चुन ही जोनाथन नामधेयस्य पून च्यू मिंग नामधेयस्य लाम टंग क्वेन नामधेयस्य सकुटुम्बस्य च श्री कैलासोन्नतद्वादशान्तापीठारूढ श्री मीनाक्षी सुन्दरेश्वराभिन्नस्वरूप परशिवपुत्ररत्नकुमार गुरुमन्यतुल्यावतार श्री पार्वती स्तन्यपानलब्ध दिव्यज्ञान सकल निगमागमसारभूत द्राविड श्रीमत्परमशिव करुणा समधिगत मुक्तामय चतुरश्रय स्थापक सर्व श्री जगत गुरु श्री ज्ञान संबंधते स्वामिनाम अवत पुनरुद्धृत सर्वज्ञ पीठारूढ़ ज्ञान साम्राज्य शासक तृणवत्युत्तर दिशत महासन्निधान महानिर्वाणि पीठस्य अष्टोत्तर सहस्र श्री महामंडलेश्वर श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य सच्चिदानंद प्रणव स्वरूप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठा नित्योत्सव नित्य मंगल नित्य कल्याण नित्य रचित नित्यानंद ध्यान पीठ महासंस्थान महासिंहासन पीठ कर्त्रे भगवान शील श्री परमहंस नित्यानंद श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामी भगवत्पादाचार्य प्रीत्यर्थम परमहंस नित्यानंद पादारविंदयोः भक्ति सिद्ध्यर्थम गुरुकृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थम क्षेम स्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्यानाम् अभिवृद्ध्यर्थम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम नमस्तमस्तु दुरितोपशान्त्यर्थम समस्त मंगल अवाप्त्यर्थम श्री सद्गुरु प्रसादेन सकुटुम्बस्य ज्ञान वैराग्य जीवन मुक्ति प्राप्त्यर्थम महासदाशिव स्वरूप सद्गुरु परमहंस नित्यानंद स्वामी सानिध्ये चंद्रग्रहण पुण्य काले शिव अस्त्र महाशांति होमम् आचार्य मुखेन यथाशक्ति करिष्ये।
कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः स्वाहा। ओम ईशान सर्वविद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोधिपति ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो। ओम होम ईशानमूर्धाय स्वाहा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम ह्रीं तत्पुरुषवक्त्राय स्वाहा। ओम अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। ओम हुम अघोरहृदयाय स्वाहा। ओम वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रवदनाय नमः सर्वभूतगमनाय नमो मनोन्मनाय नमः। ओम ह्रीं वामदेवक्षाय स्वाहा। ओम सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवेनादिभवे भवस्वमाम् भवोद्भवाय नमः। ओम हम सद्यो जातमूर्तये स्वाहा। ओम नमो वक्किरिकेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विजन्वत्केभ्यो नम आनिर्हतेभ्यो नम आमीवत्केभ्यः। ओम हां हृदयाय स्वाहा। ओम याते रुद्रशिवा तनोरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवासन्तमया गिरिसन्ताभिजागसी। ओम ह्रीं शिरसे स्वाहा। यदि भक्ता प्रथमो देव्यो अगेगश्च सर्वान् जम्भयत्सर्वासयादुधान्यः। ओम ह्रीं कवचाय स्वाहा। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुण्यवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम हौं नेत्रेभ्यः स्वाहा। प्रमुञ्चधन्वनस्तमुभयोरार्धिजोज्याम् हस्त इडवपराता भगवो वप। ओम अस्त्राय स्वाहा। उभयोरार्धिजोज्याम् याश्चते हस्त इडवपराता भगवो वप। ओम अस्त्राय स्वाहा। नमः शंभवे च मयोभवे च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम श्लीं पं सुं फट् फट् पाशुपतास्त्राय स्वाहा। ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो विश्वतो स्तवत विश्वसपादि संबाहुभ्यां नमति संवतत्रैर्द्या वा पृथिवी जनयन् देव एकः। ओम श्लीं पं सुं हुं फट् पाशुपतास्त्राय स्वाहा। ओम कद्रुद्राय प्रचेदसे मीढुट्टमाय रव्यसे। ओचे मदन्तमगुं हृदे सर्वो ह्येष रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु। ओम श्लीं पं सुं हुं फट् पाशुपतास्त्राय स्वाहा। यो रुद्रो अग्नो यो अप्सयवसति यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु। ओम श्लीं पं सुं हुं फट् पाशुपतास्त्राय स्वाहा। त्वमग्ने रुद्रो अजुरो महोदिवत्वगुं सर्दो मारुतं वृक्षयेशिषे। त्वं वातैररुणैर्यादिदङ्गयस्त्वं पूषा विदधत्पादिरुत्मनाः। आवो राजानमध्वरस्य रुद्रगुं होदारगुं सत्यजगुं रोदस्योः। अग्निं प्रातनयित्रोऽसि त्वातिरन्यरूपमवसे कृणुध्वम्। ओम श्लीं पं सुं हुं फट् पाशुपतास्त्राय स्वाहा। कैलासशिखरे रम्ये शङ्करस्य शिवालये देवता तत्र मोदन्ते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ओम श्लीं पं सुं हुं फट्
पाशुपतास्त्राय स्वाहा प्रमुञ्च धन्वनस्तमुभयोरार्त्रियोर्ज्याम् याश्च देहस्तैषवः पराता भगवो वप ॐ श्लीं पं सुं ॐ फट् पाशुपतास्त्राय स्वाहा एते शतसहस्रमयुतञ्च तञ्च शिवसङ्कल्पमस्तु ॐ श्लीं पं सुं ॐ फट् पाशुपतास्त्राय स्वाहा ॐ भीमतु तन्महेशाय சொல்லுங்க गायत्री चलो ओम तन्महेशाय विद्महे वाक्शुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् ॐ श्लीं पं सुं फट् पाशुपतास्त्राय स्वाहा एते सहस्रमयुतं पासामृत्योमत्याय हन्तवे ताने यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे ॐ श्लीं पं मृत्यवे स्वाहा ॐ श्लीं पं सं फट् पाशुपतास्त्राय स्वाहा ॐ तमुष्टिः यस्विषु सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वामहे मनसाय रुद्रल्नवाभिर्देववदरल्नवस्य ॐ श्लीं पं सं फट् पाशुपतास्त्राय स्वाहा एते सहस्रमयुतं पासामृत्योमत्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा ॐ श्लीं पं सुं फट् पाशुपतास्त्राय स्वाहा ॐ स्तुहि श्रुतङ्गर्तसदं युवानं मृगन्नाभिममुपहत्मुग्रम् मृडाजरिद्रे रुद्रस्तवानो हन्यन्ते अस्मन्निव पन्तु सेनाः ॐ श्लीं पं सुं फट् पाशुपतास्त्राय स्वाहा युवानं मृगन्न भीममुपहद्रुमुग्रम् मृडाजरिद्रे रुद्रस्तवानो हन्यन्ते अस्मन्निव पन्तु सेनाः ॐ श्लीं पं सुं फट् पाशुपतास्त्राय स्वाहा युवानं मृगन्न भीममुपहद्रुमुग्रम् मृडाजरिद्रे रुद्रस्तवानो हन्यन्ते अस्मन्निव पन्तु सेनाः ॐ श्लीं पं सुं फट् पाशुपतास्त्राय स्वाहा अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरधरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॐ श्लीं पं सुं फट् पाशुपतास्त्राय स्वाहा घोरेभ्यो घोरघोरधरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॐ श्लीं पं सुं फट् पाशुपतास्त्राय स्वाहा घोरेभ्यो घोरघोरधरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॐ श्लीं पं सुं फट् पाशुपतास्त्राय स्वाहा ॐ आत्वा वहन्तु हरयः सचेतसस्वेतैरस्मैः सह केतुमद्भिः वातादितेर्बलवद्भिर्मनोजवीरायाय शीघ्रं मम हव्याय सर्वोम् ॐ श्लीं पं सुं फट् पाशुपतास्त्राय स्वाहा ॐ आत्वा वहन्तु हरयः सचेतसस्वेतैरस्मैः सह केतुमद्भिः वातादितैर्बलवद्भिर्मनोजवैरायाय शीघ्रं मम हव्याय सर्वोम् ॐ श्लीं पं सुं फट् पाशुपतास्त्राय स्वाहा आत्वा वहन्तु हरयः सचेतसस्वेतैरस्मैः सह केतुमद्भिः वातादितैर्बलवद्भिर्मनोजवैरायाय शीघ्रं मम हव्याय सर्वो श्लीं पं सुं फट्
पाशुपतास्त्राय स्वाहा नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः ॐ श्लीं पं सुं हुं फट् पाशुपतास्त्राय स्वाहा ओमो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः ॐ श्लीं पं सुं हुं फट् पाशुपतास्त्राय स्वाहा ॐ हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः ॐ श्लीं पं सुं हुं फट् पाशुपतास्त्राय स्वाहा ॐ नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः ॐ श्लीं पं सुं हुं फट् पाशुपतास्त्राय स्वाहा ॐ नमस्तेस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः ॐ श्लीं पं सुं हुं फट् पाशुपतास्त्राय स्वाहा ॐ नमस्तेऽस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः श्लीं पं सुं हुं फट् पाशुपतास्त्राय स्वाहा गौरी मिमाय सलिलानितक्षद्येकपति शिवरीशा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूषी सहस्राक्षरा परमे व्योमल् ॐ श्लीं पं सुं हुं फट् पाशुपतास्त्राय स्वाहा बहुह्वै बह्वस्वायै बह्वजा विगायै बहुव्रीयवायै बहुमाजशिलायै बहुहिरण्यायै बहुहस्तिकायै बहुदासपूर्णायै रविमत्यै पुष्टिमत्यै बहुरायस्कोषायै राजास्तु ॐ श्लीं पं सुं हुं फट् पाशुपतास्त्राय स्वाहा ॐ व्योमव्योमाय विद्महे सूक्ष्मसूक्ष्माय धीमहि तन्नः सूक्ष्मः प्रचोदयात् ॐ श्लीं पं सुं हुं फट् पाशुपतास्त्राय स्वाहा ॐ व्योमव्योमाय विद्महे सूक्ष्मसूक्ष्माय धीमहि तन्नः सूक्ष्मः प्रचोदयात् ॐ श्लीं पं सुं हुं फट् पाशुपतास्त्राय स्वाहा ॐ व्योमव्योमाय विद्महे सूक्ष्मसूक्ष्माय धीमहि तन्नः व्योमः प्रचोदयात् ॐ श्लीं पं सुं हुं फट् पाशुपतास्त्राय स्वाहा ॐ निरञ्जनाय विद्महे निराभासाय धीमहि तन्नः सूक्ष्मः प्रचोदयात् ॐ श्लीं पं सुं हुं फट् पाशुपतास्त्राय स्वाहा ॐ श्लीं पं सुं हुं फट् पाशुपतास्त्राय स्वाहा ॐ निरञ्जनाय विद्महे निराभासाय तन्नः सूक्ष्मः प्रचोदयात् ॐ श्लीं पं सुं हुं फट् पाशुपतास्त्राय स्वाहा ॐ निरञ्जनाय विद्महे निराभासाय धीमहि तन्नः सूक्ष्मः प्रचोदयात् ॐ श्लीं पं सुं हुं फट् पाशुपतास्त्राय स्वाहा ओदनमद्ब्रुवते परमेष्टिवायेनः यदोदनः परमामेवैनग्श्रियङ्गमयति
यन्तु नदयो वरुषन्तु पर्जन्याः शुपिफलावोषधयो भवन्तु अन्नमदा मोदनवतामाभिक्षवदाम् एषागुं राजा भूयासम् प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो हस्तु वयक्स्यामपतयोरहीनाम् मधुबातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः सन्द्वोषधीः मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिवगुमृतः मधुद्योरस्तुमः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाग्नस्तु सूर्यः माद्भिर्गावो भवन्तु नः मधु 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 ॐ श्लीं पं फट् पाशुपतास्त्राय स्वाहा ॐ पञ्चवक्त्रं महाघोरं दशबाहुं त्रिलोचनं विकृतं भास्वरं चोग्रं कृष्णपिङ्गोर्ध्वकेशकं खड्गकेटकनाराच धनुःसूत्रकमण्डलं शक्तिं त्रिशूलं परशुं ब्रह्मदण्डकरान्वितं ध्यात्वा पाशुपतं देवं साङ्गं सम्पूजयेद्बुधः ॐ तन्महेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिव प्रचोदयात् ॐ श्लीं पं सुं हुं फट् पाशुपदास्त्राय स्वाहा ओम इदं विष्णुर्विचक्रेत्रेधानि दधे पदं समूढमस्य पागं सुरे ओम ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री सद्गुरु प्रीत्यर्थं श्री नित्यानंदेश्वरी आदिशक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर सदाशिव प्रीत्यर्थं अद्य पूर्व संकल्प पूर्वोक्त एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ शिवानी मुद्गल नाम्न्याः अमरा मुद्गल नामधेयस्य सकुटुम्बस्य च पूर्व संकल्पित प्रकारेण महासदाशिव स्वरूप सद्गुरु परमहंस नित्यानंद स्वामी सान्निध्ये चंद्रग्रहण महापुण्यकाले शिवास्त्र महाशांति होमम् आचार्य मुखेन पूर्ववत् यथाशक्ति करिष्ये। Nithyananda, requesting all those present here, please do not take any form of pictures or videos. Audiography or videography is strictly prohibited if you are physically here in the Bengaluru Adino. Request you, please do not use your mobile phones. Thank you. ओम व्योमव्यापिने व्योमरूपाय सर्वव्यापिने शिवाय अनंताय अनाथाय अनाश्रिताय ध्रुवाय शाश्वताय योगपीठ संस्थिताय नित्ययोगिने
ध्यानहाराय ॐ नमः शिवाय सर्वप्रभवे शिवाय ईशानमूर्धाय तत्पुरुषवक्त्राय अघोरहृदयाय वामदेवगुह्याय सद्योजातमूर्तये ॐ नमो नमः गुह्यादिगुह्याय गोप्त्रे अनिधनाय सर्वयोगाधिकृताय सर्वविद्याधिपाय ज्योतिरूपाय परमेश्वरपराय अचेतन अचेतन व्योमिन् व्योमिन् व्यापिन् व्यापिन् अरूपिन् अरूपिन् प्रथम प्रथम तेजस्तेजः ज्योतिर्ज्योतिः उप अनग्नि अधूम अभस्म अनादे नाना नाना धू 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 ॐ भूः ॐ भुवः ॐ सुवः निधन निधनोद्भव शिव शर्व परमात्मन् महेश्वर महादेव सद्भवेश्वर महातेजः योगादे मुञ्च मुञ्च प्रथम प्रथम शर्व शर्व भव भव भवोद्भव सर्वभूतसुखप्रद सर्वसान्निध्यकर ब्रह्म विष्णुरुद्र पर अनर्चित अनर्चित असंस्तुता संस्तुत पूर्वास्थित पूर्वस्थित साक्षि साक्षि तरु तुरु पतंग पतंग पिंग पिंग ज्ञान शब्द शब्द सूक्ष्म सूक्ष्म शिव सर्वदा नमः शिवाय ओम नमो नमः शिवाय ओम ईशानमूर्धाय नमः ओम तत्पुरुषवक्त्राय नमः ओम अघोरहृदयाय नमः ओम वामदेवगुह्याय नमः ओम सद्योजातमूर्तये नमः ओम हृदयाय नमः ओम शिरसे नमः ओम शिखायै नमः ओम कवचाय नमः ओम नेत्रेभ्यो नमः ओम अस्त्राय नमः ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः नमन्ति ऋषयो देवा नमन्त्यप्सरसाङ्गणाः नरा नमन्ति देवेशं नकाराय नमो नमः महादेवं महात्मानं महाध्यानपरायणं महापापहरं देवं मकाराय नमो नमः शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकं शिवमेकपदं नित्यं हिकाय नमो नमः वाहनं वृषभो यस्य वासुकीकण्ठभूषणं वामे शक्तिधरं देवं मकाराय नमो नमः यत्र यत्र स्थितो देव सर्वव्यापी महेश्वरः यो गुरुः सर्वदेवानां यकाराय नमो नमः
शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। दिक्पालनाथादिविभावनाय चन्द्रार्कचूढाय सनातनाय संसारदुःखार्णवतारणाय शोणाधिनाथाय नमः शिवाय। जगन्निभावाय जगद्धिताय सेनादिनाथाय जयप्रदाय पूर्णाय पुण्याय पुरातनाय शोणाधिनाथाय नमः शिवाय। आगीशवन्ध्याय वरप्रदाय उमाय गणेश्वराय चन्द्रार्कवैश्वानराय शोणाधिनाथाय नमः शिवाय। रत्नादिपूर्णाय सराधराय वेदाश्वयुक्ताय विधिस्तुताय चन्द्रार्कचक्रा शोणाधिनाथाय नमः शिवाय। विरिञ्चिसारथ्य विराजिताय गीताय गिरीश्वराय फालाग्निनेत्राय फलीश्वराय शोणाधिनाथाय नमः शिवाय। गोविन्दबाणाय गुणत्रय धिनाथाय नमः शिवाय। जरादिवर्ज्याय जटाधराय अचिन्त्यरूपाय हरिप्रियाय भक्तस्य पापघ्नविनाशनाय शोणाधिनाथाय नमः शिवाय। சிவா திருச்சிற்றம்பலம். ஹர ஹர நம பார்வதி பதயே. ஹர ஹர மகாதேவ. நீல மாமணி கண்டனை நீள் சடை நீல மாமணி கண்டனை நீள் சடை கோல மாமதி கங்கையும் சோடினார் நீல மாமணி கண்டனை நீள் சடை கோல மாமதி கங்கையும் சோடினார் சூலம் மான்மழு ஏந்தி சுடர்முடி சூலம் மான்மழு ஏந்தி சுடர்முடி பால் நெய்யாடுவர் பாலை துறையரே பால் நெய்யாடுவர் பால் நெய்யாடுவர் பாலை துறையரே விண்ணினார் பணிந்து ஏத்த இருந்தவன் மண்ணினார் மரபாது சிவாய என்று விண்ணினார் பணிந்து ஏத்த இருந்தவன் மண்ணினார் மரபாது
சிவாய என்று எண்ணினார்க்கு இடமாய் எழில் வானகம் எண்ணினார்க்கு இடமாய் எழில் வானகம் பண்ணினார் அவர் பாலை துறையரே எண்ணினார்க்கு சிவாய என்று எண்ணினார்க்கு இடமாய் எழில் வானகம் பண்ணினார் அவர் பாலை துறையரே ஏ சிட்டனை சிவனை சேழும் ஜோதியை சிட்டனை சிவனை சேழும் ஜோதியை அட்டமூர்த்தியை ஆல நிழல் அமர் பட்டனை தீரே பாண்டி கொடுமோடி ஆல நிழல் அமர் பட்டனை தீரே பாண்டி கொடுமூடி நட்டனை தோழ நம்பினை சமே கொடுமுடி நட்டனை தோழ நம்பினை நாசமே திருவானவர் பெருக்கே நின்றி செய்வானவர் கொடும் மூடி என்றலும் தீவினை கற்கடும் இது கை வந்த யோகமே திருக்கொடும் மூடி என்றலும் தீவினை கருக்கெடும் இது கை வந்த யோகமே சோடு சர்ப்ப வாயுவை விடாதடக்கி தூய ஒளி காணு முக்தி விதமாக சூலமென ஓடு சர்ப்ப வாயுவை விடாதடக்கி தூய ஒளி காணு முக்தி விதமாக சூழகத்தை இழலோடெரித்து ஜோதிமணி பீடம் இட்ட மடமேவி சூழுமிருள் பாவகத்தை வீழலோடெரித்து ஜோதிமணி பீடம் இட்ட மடமேவி மேலை வெளியாயிரத்து நாளிரு பராபரத்தின் மேவி அருணாச்சலத்தின் உடன் மூழ்கி மேலை வெளியாயிரத்து நாளிரு பராபரத்தின் மேவி அருணாச்சலத்தின் உடன் மூழ்கி மேவி அருணாச்சலத்தின் உடன் மூழ்கி வேலுமயில் வாகன பிரகாசமதிலே தரித்து வீடு மதுவே சிறக்க அருள்வாயே வேலுமயில் வாகன
பிரகாசமதிலே தரித்து விடுமதுவே சிறக்க அருள்வாயே விடுமதுவே சிறக்க அருள்வாயே ஓலசுரராழியட்டு வாழகிரி மாயவெற்பு ஓலசுரராழியட்டு வாழகிரி மாயகத்து ஊடுருவ வேல் தொடுத்த மயில் வீரா ஊடுருவ வேல் தொடுத்த மயில் வீரா ஊடுருவ வேல் தொடுத்த மயில் வீரா ஓது குரமான் வனத்தில் மேவியவள் கால் பிடித்து ஓமெனுபதேசவித்தொடு அணைவோனே ஓது குரமான் வனத்தில் மேவியவள் கால் பிடித்து ஓமெனுபதேசவித்தொடு அணைவோனே காலனொடு மேதி மட்ட ஊழி புவி மேல் கிடத்து காலனிடமேவு சக்தி அருள்பாலா காலனொடு மேதி மட்ட ஊழி புவி மேல் கிடத்து காலனிடமேவு சக்தி அருள்பாலா கால முதல் வாழ்புவிக்கு நாரணகர் கோபுரத்தில் காணமயில் மேல் தரித்த பெருமாளே கால முதல் வாழ்புவிக்க நாரணகர் கோபுரத்து காலநகர் வாழ்புவிக்கு காலநகர் வாழ்புவிக்கு காலநகர் மேல் புவிக்க காணமயில் மேல் தரித்த பெருமாளே கால முதல் வாழ்புவிக்க நாரணகர் கோபுரத்து காலமயில் மேல் தரித்த பெருமாளே காலமயில் மேல் தரித்த பெருமாளே பெருமாளே. ஓம் வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோஹரா. மற்ற பட்டனகின்றி நின் திருபாதமே மனம் பாவித்தேன் பெற்றலும் பிறந்தேன் இனி அத தன்மை வந்தேதினேன் கற்றவர் தொழுதேத்தும் சீர்கரை ஊரிற் பாண்டி கொடுமூடி நான் மறக்கேனும் சொல்லும் நான் நமச்சிவாயவே. ஸ்ரீகாந்தத்ருகினோபமன்யுதபன ஸ்கந்தேந்திர நந்தியாதயः பிராச்சீன குரவோபி யஸ்ய கருணா லேசாத்கதா கௌரவம் தம் சர்வாதிகுரும் மனோஜ்ஞவபுஷம் மந்தஸ்மிதாலங்கிருதம் சின்முத்ராங்கிதமுக்தபாணிநளினம் சித்தே சிவம் குர்மஹே. யஸ்யாம் ஔஷதபூஷணத்வனிமயி மூர்த்தி பரா பைந்தவி த்யேயா சங்கர மந்திரதந்திர நிரதைஹி ஞானக்ரியாங்கி சிவா சர்வைஸ்வர்ய சுகப்ரதா நிருபமா சாதாசிவி நிர்மலா நாதாக்கியாய சதாசிவாய மகதே சாந்தாய தஸ்மை நமஹ. நாதாக்கியாய சதாசிவாய மகதே சாந்தாய தஸ்மை நமஹ.
श्रीमन् मूलमनूत्थनादशिखया ब्रह्मादि सदाशिव स्थानत्यागगतिक्रमोऽर्थविलसति रोमान्तसंस्थायिने बोधानन्दमयाय सर्वविभवे बोधानन्दमयाय सर्वविभवे नित्याय विश्वात्मने शुद्धायामल तेजसे च मगते तस्मै परस्मै नमः। ओ हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सहस्रदेवताभ्यः स्वाहा
पूर्णाहुति समयः सप्तशातपूर्य उत्करो वरुधो मुखं द्रुतं तदग्रे पुष्पं ॐ भूर्णाहुतिवत्तमाञ्जहाते सर्वमयि पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति ॐ श्लीं पञ्चमं फट्पाशुपदास्राय षट् विहित्वा पुनः पूर्णाहुत्वा ॐ श्लीं पञ्चमं फट्पाशुपदास्राय औषधे व्याघ्रभूत्वा ॐ भूस्वाहा ॐ भस्वाहा ॐ स्वाहा ॐ भूर्भुवस्व स्वाहा अग्नये स्वाहा होमाय स्वाहा अग्निगोमाभ्यामन्दये शुद्धकृते स्वाहा आजमात्रं पूर्वोर्ध्वधाये प्राणानायम्य परिषित्य अतिदेन्नमकताः अन्नमदेन्नमकताः सरस्वतेन्नमकताः देवतमिदपरासाभिः अग्निदेव धूपदीपादिकं नत्वा पाशुपदास्त्राय नमः धूपमाग्रापयामि पाशुपदास्त्राय नमः ज्ञानप्रदोयं दीपं दर्शयामि पाशुपदास्त्राय स्वाहा विशेष अन्नवर्गादिकं स्वाहा निवेदयामि देवसुतासमर्पयामि समर्पयामि पूर्णोहस्ताभ्यां निवेदयामि सर्वोपचारार्थे कर्पूरनीराजनम् ॐ ब्रह्मञ्जधन्मनसमुभजोरार्थिजोद्या याच देहसैडमपराता भगवो वपा अस्त्रदेवताभ्यो नमः यमः कर्पूरनीराजनज्योतिः आचमनीयं समर्पयामि संयोज्य यज्ञेन यज्ञमयदण्डदेवाः तानि धर्माणि प्रधान्यासने यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः अग्निदेवतानि कुम्भे संयोज्ये आवाह्ये अर्घ्यं दत्त्वा ब्रह्मादिभ्यो बलिं दद्यात् भविष्य बलिवन्नमादाय पूर्वे ब्रह्मणे स्वाहा तस्मै स्वाहा इंद्राय स्वाहा उत्तरे ईश्वराय स्वाहा इंद्राय स्वाहा इंद्राय स्वाहा वज्रार्भ्य स्वाहा अंतर्बलि बहिर्बलि देवताभ्यः स्वाहा यो रुद्रोरुद्रकर्मः रुद्रतामहागतः अस्मन्ने स्थले विद्यमाने समस्त वासुदेवताभ्यः स्वाहा इति बलिं दत्त्वा ब्रह्मादिभ्यो अर्घ्यं दत्त्वा ब्रह्मणे स्वाहा विष्णवे स्वाहा रुद्राय स्वाहा ईश्वराय इंद्रार्भ्यो रुद्रार्भ्यो स्वाहा अर्घ्यं दत्त्वा ब्रह्मादिभ्यो परामुखार्घ्यं दत्त्वा अग्नये स्वाहा स्वहृदि संयोज्य रक्षां गृहीत्वा ॐ मानस्तोके तनये मानस्तोकेतन योमानायुषमानो घोषमानो स्वे श्रीरिणः वीरान्मानो ध्रुवा विधोमतीर्हिष्मन्तो नमसा विधीमति यज्ञरक्षां कुम्भे समर्प्य बृहत्सामक्तोटं दट्टभोजसुभृतमकरवीरम् इन्द्रस्तोमेन यज्ञरक्षा कुम्भे समर्प्य वेदिकायां धूपदीपादिकं दत्त्वा ओम धूरसुधूर्वधूर्वन्तं धूर्वस्वान्धूर्वजितोर्वयं वयं भूर्वा महा धूपमाघ्रापयामि घोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः नमस्ते ओम उद्दीभ्यः सदा नवेदो भगन्नरजन्ममास्तमज्ञमापहरीमदिशो निशा अनोहकं दीर्घानवेदो कामसंपुरुषं जगति अभिप्रयत्नादिः श्रियामा परिपालया
ज्ञानप्रदोऽयं दीपं दर्शयामि पूर्ववस्वः अन्नं प्राणमन्नववानमाहुः अन्नं रजं जमुदीपादमाहुः अन्नं ब्रह्माणो जरसं वदन्ति अन्नमाहुः प्रजननं प्रजानागमन् सत्यं ब्रह्मवदिकस्तस्य नार्यमनं पुष्यदिनोदकायं केवलागो भवनकेताधि अहं मेधस्तनयन्वर्षन्नस्मि मामनद्यावन्दन्यान् अहं सदमतो भवामि अदादित्यादि सर्वे तपन्ति अमदे अमदारणे अमदोद्भवे अमृतवर्षिणि अमृतस्वरूपिणि अमृतं श्रावय श्रावय स्वाहा अन्नप्रज्ञानिकं निवेदयामि निवेदनानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे कर्पूरनीराजनम् ॐ सर्वस्यापि सर्वस्य सर्वमेव देनाप्नोति सर्वास्यति प्रपञ्चधर्मनर्तमुभयोरार्थयोद्या याश्च देहस्तैडवपराता भगवोप शिवास्त्राय विद्महे कलानाथाय धीमहि तन्नो अस्त्र प्रचोदयात् समस्त्रदेवताभ्यो नमः यमः कर्पूरनीराजनज्योतिः आचमनीयं समर्पयामि भक्त महाजनानां सर्वेषां संकल्प तत्पराणां सर्वेषां सेवार्थिनां नित्यानंद स्वामी योगीन्द्राणां परमहंस यतीन्द्राणां सर्वेषां तत्शिष्यवर्गाणां धर्मार्थकाम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं सर्वारिष्ट निवृत्त्यर्थं सर्वदोष शान्त्यर्थं समस्त सन्मंगल अवाप्त्यर्थं सकल सौभाग्य अभिवृद्ध्यर्थं समस्त पीड़ा दोष शापको निवृत्त्यर्थं श्री अष्टदश आयुध परिवृत श्री पाशुपतय सांभ परमेश्वर प्रसाद फल सिद्ध्यर्थं पाशुपतेश्वर सांभ चरणारविन्दयो अष्टोत्तर शतपुष्पार्चनां चाद्य करिष्ये। ओम शिवाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम पिनाकिने नमः, ओम शशिशेखराय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम विरूपाक्षाय नमः, ओम कपर्दिने नमः, ओम नीललोहिताय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम शूलपाणये नमः, ओम खड्वांगिने नमः, ओम विष्णुवल्लभाय नमः, ओम शिपिविष्टाय नमः, ओम अंबिकानाथाय नमः, ओम श्रीकंठाय नमः, ओम भक्तवत्सलाय नमः, ओम भवाय नमः, ओम सर्वाय नमः, ओम त्रिलोकेशाय नमः, ओम श्रीकंठाय नमः, ओम शिवाप्रियाय नमः, ओम उग्राय नमः, ओम कपर्दिने नमः, ओम कामारये नमः, ओम अंधकासुरसूदनाय नमः, ओम गंगाधराय नमः, ओम ललाटाक्षाय नमः, ओम कालकालाय नमः, ओम कृपानिधये नमः, ओम भीमाय नमः, ओम परशुहस्ताय नमः, ओम मृगपाणये नमः, ओम जटाधराय नमः, ओम कैलासवासिने नमः, ओम कवचिने नमः, ओम कठोराय नमः, ओम त्रिपुरांतकाय नमः, ओम वृषांकाय नमः, ओम वृषभारूढ़ाय नमः, ओम भस्मोद्धूलित विग्रहाय नमः, ओम सामप्रियाय नमः, ओम स्वरमयाय नमः, ओम त्रयीमूर्तये नमः, ओम अनीश्वराय नमः, ओम सर्वज्ञाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः, ओम हविषे नमः, ओम यज्ञमयाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम पंचभक्त्राय नमः, ओम सदाशिवाय नमः, ओम विश्वेश्वराय नमः, ओम वीरभद्राय नमः, ओम गणनाथाय नमः, ओम प्रजापतये नमः, ओम हिरण्यरेतसे नमः, ओम दुर्धर्षाय नमः, ओम गिरीशाय नमः, ओम गिरिशाय नमः, ओम अनघाय नमः, ओम भुजंगभूषणाय नमः, ओम भर्गाय नमः, ओम गिरिधन्वने नमः, ओम गिरिप्रियाय नमः, ओम कृत्तिवाससे नमः, ओम पुरारातये नमः,
ओम भगवते नमः ओम प्रमथाधिपाय नमः ओम मृत्युंजयाय नमः ओम सूक्ष्मतनवे नमः ओम जगद्व्यापिने नमः ओम जगद्गुरवे नमः ओम व्योमकेशाय नमः ओम महासेन जनकाय नमः ओम चारुविक्रमाय नमः ओम रुद्राय नमः ओम भूतपतये नमः ओम स्थानवे नमः ओम अहिर्बुद्ध्याय नमः ओम दिगंबराय नमः ओम अष्टमूर्तये नमः ओम अनेकात्मने नमः ओम सात्विकाय नमः ओम शुद्ध विग्रहाय नमः ओम शाश्वताय नमः ओम खंडपरशवे नमः ओम अजाय नमः ओम पाशविमोचकाय नमः ओम मृडाय नमः ओम पशुपतये नमः ओम देवाय नमः ओम अव्ययाय नमः ओम हरये नमः ओम पूषदन्तविदे नमः ओम अव्यग्राय नमः ओम दक्षाध्वरहराय नमः ओम हराय नमः ओम भगनेत्रविदे नमः ओम अव्यग्राय नमः ओम सहस्राक्षाय नमः ओम सहस्रपदे नमः ओम अपवर्गप्रदाय नमः ओम अनन्ताय नमः ओम तारकाय नमः ओम परमेश्वराय नमः ओम भवाय देवाय नमः ओम सर्वाय देवाय नमः ओम ईशानाय देवाय नमः ओम पशुपते देवाय नमः ओम उग्राय देवाय नमः ओम रुद्राय देवाय नमः ओम भीमाय देवाय नमः ओम महते देवाय नमः ओम श्री पराशक्तिं भासमेत परशिवाय सांब सदाशिवाय नमः पाशुपदास्त्र शक्ति सहिताय श्री पाशुपदास्त्रमूर्तये नमः शिवास्त्रमूर्ते नमः आत्मतत्वाय नमः विद्यातत्वाय नमः शिवतत्वाय नमः ब्रह्मणे नमः विष्णवे नमः रुद्राय नमः गणपते नमः सुंदराय नमः सर्वदेवताभ्यो नमः शिवास्त्र अंगदेवताभ्यो नमः फलतांबूलादिकं निवेद्य ओम तवे अश्विनो बाहुभ्यां हस्ताभ्यां नाळीकेरघण्टद्वयं विविध फलवर्गाणि निवेदयामि पूगी फलसमायुक्तं नागवल्लीधलैर्युतं कर्पूरचूर्ण संयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां कर्पूरताम्बूलं समर्पयामि पानीयं समर्पयामि हस्तोद्वर्तनं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि कृतञ्जलौ पुष्पं गृहीत्वा मंत्रपुष्पाञ्जलिं विदध्यात् ओम योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् वसुमान् भवति चन्द्रमापालपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् वसुमान् भवति य एवं वेद यो आयतनं वेद आयतनवान् भवति त्वमग्ने रुद्रो असुरो महादिमस्तकं दर्भमारुतं कयीसिके संवातेररुणैर्यादिसंगयस्त्वं पूजाविदधस्तादिरत्मनाम् आवो राजानमध्वरस्य रुद्रगं होतारगं सत्यधनं प्रोदस्योः अग्निं पुरातनयत्नारचित्ताद्भिरण्यरूपमवसे कृणुध्वम् नमो बाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतय उमापतये पशुपतये नमो नमः प्रमुञ्चद्वन्द्वनस्त्वमुभयोरार्धयोज्याम् याश्च देहः स इडवः पराता भगवो पाशुपदास्त्र सांब सदाशिव मूर्तये नमः वेदोक्त मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि चतुर्वेद प्रिया चतुर्वेदमवधारय ऋचा प्राची मगधीदिग्युज्यते देवदेवोत्तमा देवता सर्व अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायक जय विजयी भव ऋग्वेद प्रिया शुभदास्त्र मूर्ते ऋग्वेदमवधारय ओम अग्नि पुरोहितं देवमृत्युजं होता अहं रुद्रेभिर्वसोभिश्चराम्यमादित्यैरुदविश्वदेवैः अहं मित्रावरुणो अहमश्विनो अहं सोमा हनसं विवर्ण्यहं दुष्टा
హారముతభూషణం భగం అహం వేదామి ద్రవీణం హవిష్మాదేశో యజమానాయ సున్వతే రాష్ట్రే సంగమాని వసోనాం జగతుషి ప్రథమా యజ్ఞయానాం తామ్మా వ్యదతు పురుత్రా భూరిసాత్రాంభూర్యా వేసయంతి మయాసో అన్నమతిర్యో వివస్యాదీయ ప్రాణీతీయీ శృణోద్యుతం అమంతవో వాంత ఉపశ్రువంతి శృతిశ్రుతశ్రుద్ధివందే వదామి ఇదం వదామి జుట్టం దేవేభిర్దమానుషేభిః యం కామయేతం తముగ్రం గృహోమిదం బ్రహ్మాణం తముషిందం సోమేధాం అహం రుద్రాయ ధనురాదానో మే బ్రహ్మద్విషే సరవేహందవావో అంజనాయ సమదం గృణామ్యహం ద్యావా పృథివీ ఆవివేశ అహం సోమే పితరామస్య మూర్ధ్వ మమ యోనిరప్స్వ అంతఃసముద్రే తతో వితిష్ఠే భువనాని విశ్వాసామోద్య మర్దనోపస్పృశామి అహం జీవవాత ఇవ పవాభ్యారభావానా భువనాని విశ్వా పరో దివా పర ఏనా పృథివీ తావాది మహిళా సంభాభూవా. ఓం దక్షిణామాహుర్యజుషామపార దేవత సార్వభౌమాఖిల అండకోటి బ్రహ్మాండ నాయక విజయ జయ విజయీ భవ శ్రీ నిత్యానందేశ్వర సన్నిధౌ శాస్త్రమూర్తే యాజుష ప్రియ యజుర్వేదమవధారయ. ఓం పాయవస్థదేవో వస్సవితా ప్రార్పయతు శ్రేష్ఠతమాయ కర్మణే. ఓం గుంగోర్యాయ 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 గుంగోర్యా గుంగోర్యాయ గుంగోర్ గుంగోర్యాసిని వాలి గుంగోర్ గుంగోర్యాసిని వాలి యాసిని వాలి యాసిని వాలి యాసిని వాలి యాసిని వాలియా సిని వాలే సిని వాలే యా రాకా రాకా యాసిని వాలే సిని వాలే యా రాకా యా రాకా రాకా యా రాకా యా రాకా యా రాకా యా రాకా యా రాకా రాకా యా సరస్వతి సరస్వతి యా రాకా రాకా యా సరస్వతి యా సరస్వతి సరస్వతి యా సరస్వతి సరస్వతి సరస్వతి. ఓం సామ్నాముదీజీ మగధీ దిగుచ్చతే దేవదేవోత్తమా దేవత సార్వభౌమాఖిలాండకోటి నాయక సామగాన ప్రియ పాశుపదాస్త్ర ప్రభో సామవేదమవధారయ. ఓం నగ్నాయాహి విదలే గృణానో హవ్యదాతయే నిహోతా సత్సి. ఓం ఐ తువోర్వా వాహ వాహ ఇహ సర్వైశ్వా నారాయ ప్రాదిశో జ్యోతిర్బృహతి భూర్భృతం పృథివీ పృథివీ
पृथिव्योर्वा आय पृथिव्योर्वा आय वाह वाह इह सर्वैश्वा नाराय प्रादिशो ज्योतिर्बृहति ओम अथर्वणामंगिरसां प्रतीची देवदेवोत्तमा देवता सर्वोमागिण्डकोटि ब्रह्मांड नायक गादि महर्षि संस्तुत चरणारविंद युगल पाशुपतास्त्र प्रभो अथर्वण वेद प्रिया अथर्वण वेदमवधाया ओम सन्नो देवीरभिष्टयापो भवन्तु पेतजे संयोरभिश्रवन्तु नः हरों योगवैरुद्रस्य भगवान्यश्च ब्रह्म भूर्भुवस्सुवस्तस्मै वै नमो नमः जनपतो विश्वरूपोऽसि हरों योगवैरुद्रस्य भगवान्यश्च विष्णुर्भूर्भुव सुवस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जनपतो विश्वरूपोऽसि हरों योगवैरुद्रस्य भगवान्यश्च वहेशो भूर्भुवस्सुवस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जनपतो विश्वरूपोऽसि हरों योगवैरुद्रस्य भगवान् याचो मा भूर्भुव सुवस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जनपतो विश्वरूपोऽसि ओम देवदेवोत्तमा देवता सर्वमखिल अंडकोटि ब्रह्मांड नायक वक्त्र पंचश्रोतोद्भव शिवागम श्रवण प्रिया शिवागमस्तवमवधारया वेदान्तार्थ विचारसार सुगमम् शैवं रहस्यं मया देव्यै दत्तमतस्तजा बलवता स्नेहेन दत्तं मुने स्कन्दायासुरशिक्षकाय ददताम् गच्छाधुना तां प्रति त्युक्तौ सौ गिरिजामनोहरवचः श्रुत्वा मुनिर्निर्यजौ शान्त्यतीततलाशीर्षम् शान्तिवक्त्रसरोरुहम् विद्याविदतवक्षोजम् प्रतिष्ठा गुह्यमण्डलम् निवृत्तिर्जानुजङ्गाङ्घ्रिम् भुवनाध्वातनोरुहम् वर्णत्वं मन्त्ररुधिरम् पदमाङ्गविराजितम् तत्त्वास्थिमज्जा शुक्लादि ध्यानम् सद्भोगमोक्षदम् शिवान्त तत्त्वगर्भाध्व व्यापिनम् सर्वदा शिवम् यस्याघुरागमविद परिपूर्ण त्यपि निविष्टममम् प्रपञ्चम् तस्मै तमाल रुचि बासुरकन्धराय नारायणी सहचराय नमः शिवाय देवदेवोत्तमा देवता सर्वमखिल अंडकोटि ब्रह्मांड नायक महर्षि प्रणीत श्रौत सूत्र प्रिया सूत्रमवधारया अथातो धरिष पूर्णमासो व्याख्यास्यामः प्राग्निहोत्रम् हुत्वा अन्यमागवनीयम् प्रलीय अग्नेरन्वादधाते नगरश्रयोऽन्यमग्निम् प्रयते देवदेवोत्तमा देवता सर्वमखिल अंडकोटि ब्रह्मांड नायक शिवपुराण प्रिया शिवमहापुराणमवधारया आद्यम् पुरुषमीशानम् पुरुषोत्तमम् पुरस्कृतम् परमेवाक्षरम् ब्रह्म व्यक्ताव्यक्तम् सनातनम् स्तोत्र प्रिया महर्षि प्रणीत शिव स्तोत्रमवधारया ओम नक्षत्रनाथोज्ज्वलशेखराय नमर्जनाभीष्टवरप्रदाय
नदात्मजावामविनाशकाय नित्यानन्देश्वराय नमः शिवाय मन्दाकिनीलालितशेखराय महोरगैर्भूषणभूषिताय मनोहराभिक्तवरप्रदाय नित्यानन्देश्वराय नमः शिवाय शिवाप्रिया पूजनतोषिताय शिवासमालिङ्गितविग्रहाय शिवप्रदमङ्गलरूपकाय नित्यानन्देश्वराय नमः शिवाय वाचामगोचेश्वरवैभवाय वाचस्पतिः सेवितसुन्दराय वामादिसत्यावृतपूजिताय नित्यानन्देश्वराय नमः शिवाय यच्छत्कुबेरस्य सुमित्रकाय यमादियोगाट्टगनायकाय यदीन्द्रपूज्याय यमान्तकाय नित्यानन्देशाय नमः शिवाय प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्याय्येन मार्गेण महीम् महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्याः समस्ताः सुखिनो भवन्तु शिवातिर्चित्रम्बलम् மறையுடையாய் தோளுடையாய் வார்சடி மேல் மறையுடையாய் வார்சடை மேல் வளரும் பிறையுடையாய் பிஞகனே என்று உன்னை பேசி நல்லால் மறையுடையாய் தோளுடையாய் வார்சடை மேல் வளரும் பிறையுடையாய் பிஞகனே என்று உன்னை பேசி நல்லால் குறையுடையார் குற்றம் போராய் குறையுடையார் குற்றம் போராய் கொள்கையினால் உயர்ந்த குறையுடையார் இடர்களையாய் கொள்கையினால் உயர்ந்த நிறையுடையாய் நெடுங்களம் நீரையுடையார் இடர்களையாய் நெடுங்களம் மனத்தகத்தான் தலைமேல் வாக்கினேன் வாயாரத்தன்னடியே பாடும் தொண்டர் இனத்தகத்தான் இமயவர் தம் சிரத்தின் மேலான் ஏழண்டத்து அப்பாலன் பார்ச்சம்பொன் புனத்தகத்தான் அருள் பொறுப்பிடையான் நெருப்பிடையான் காற்றினான் பலத்தகத்தான் கைலாயத்து உச்சியுள்ளான் கனத்தகத்தான் கைலாயத்து உச்சியுள்ளான் காலத்தியான் அவன் என் கண்ணுள்ளானே தனதனற்றோழ சங்கர சூலபாணியே ஸ்தானுவே சிவனே கனகனற்றூனே கற்பகக் கொழுந்து கண்கள் மூலோர் கரும்பே அனகனே குமர விநாயக ஜனக அம்பலத்து அமரசேகரனே உனகள் இணையம் நெஞ்சினுள் இனிதான்
தொண்டனேன் நுகருமானுகரே முத்தினரி அறியாத மூர்க்கருளை பக்தி பழவிகள் மாளும் மன்னம் சித்தமலம் அறிவித்து சிவமாக்கி எனையாண்ட அத்தன் என கருளியவார் ஆர் பெறுவார் அச்சோவே. மன்னுக தில்லை வளர்களும் பக்தர்கள் வஞ்சகர் போய் பொன்னி மண்டபத்துள்ளே புகுந்து புவனி எல்லாம் விளங்க அன்ன நடை மடவாள் உமைகோன் அடியோமுக்கருள் புரிந்து பின்னை பிறவி அறுக்க நெறி தந்த பித்தர்க்கு பல்லாண்டு கூறுதுமே. 5 பேரறிவும் கண்களே கொள்ள அளப்பரும் கரணங்கள் 4 சிந்தையேயாக குணமொரு 3 திருந்து சாத்விகமேயாக இந்துவாழ் சடையான் ஆடும் ஆனந்த வெள்ளையில் வந்த பேரின்ப வெள்ளத்துள் திளைத்து மாறிலா மகிழ்ச்சியில் மலர்ந்தார். சதாசிவாச்சல மகா ஆரிரு தடந்தோள் வாழ்க அருமுகம் வாழ்க வெற்பை குருசை தனிவேல் வாழ்க குக்குடம் வாழ்க செவ்வேள் ஏரிய மஞ்சை வாழ்க யானை தன்னணங்கு வாழ்க மாறிலா வள்ளி வாழ்க வாழ்க சீரடியார் எல்லாம் வாழ்க சீரடியார் எல்லாம். அரர் நம பார்வதி பதகி. काले वर्षद पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो भूसुराः सन्तु निर्भयाः. माभ्यो नमः. स्वस्ति मंत्रार्थाः सत्याः सफलाः सन्ति भवन्तो महान्तो अनुगृह्णन्तु. अस्मिन् यज्ञमण्डपे आवाहितस्य भगवतस्य श्री पार्वती परमेश्वरस्य अनुष्ठितेऽस्मिन् महाशान्तिके महामङ्गलकर्मणि मंत्रतंत्र क्रियालोपे काल नियम श्रद्धालोपे सत्यपि सर्वं यथोक्तं यथा आगमोक्त प्रकारेण अनुष्ठितं सांगं सत्यं अविघ्नं अशिथिलं अच्छिद्रं सुखदं सुभदं तत्तत् फलदं भगवत प्रीतिकरं भक्तानां ईप्सित फलप्रदं च भूयादिति भवन्तो महान्तो अनुगृह्णन्तु. अस्य अम्ब परमेश्वरस्य पाशुपदास्त्र मुहूर्तेः सकल निष्कल सकलाकल स्वरूपस्य षट्त्रिंशत् तत्त्वातीतस्य षाड्गुण्य परिपूरितस्य सांब परमेश्वरस्य प्रसादात् एते भक्तजनाः नागरिकाः सर्वे विद्वन्महाजनाः नीरोगाः निरुपद्रवाः सदा आचार संपन्नाः साग्निहोत्राः समवेताः आढ्याः अनुरणाः सर्वे दयाळवः श्री नित्यानंदेश्वर यतीन्द्रयो अचंचला भक्तिमन्तः गुरुभक्तिमन्तश्च नित्यानंदेश्वर आलय कैंकर्य कर्मणि शाश्वत कैंकर्य प्राप्तिमन्तश्च भूयन्तो महन्तु. अस्य यज्ञालयस्य क्वचिन् निजवासक निकटागम समयक्षण मृदुन्यष्पद दतिनिश्चल निजपुष्पक परिदर्शन कृतदुर्ग्रह भृतदुर्धर दशकंधर भुजलागव परिचालित रजताचल सभयागत गिरिजाभुज रचितातुल परिरंभज सुख संभृत निज रूपक विधि वीक्षण बहुतोषित निज मानसस्य पार्वती समालिंगित विग्रहस्य सांब परमेश्वरस्य प्रसादात् यतीन्द्राणां परमहंस यतीन्द्राणां मनसि चिंतित फलावाप्तिः सर्वेषां भक्त महाजनानां संकल्प तत्पराणां धनोपकारिणां धान्योपकारिणां शरीरोपकारिणां सर्वेषां सेवार्थिनां धनगणक वस्तुवाहन लक्ष्मी कटाक्ष सिद्धिः समस्त पाप पीडा दोष निवृत्तिः सर्व निवृत्तिः सर्व अभीष्ट फल सिद्धिः सर्वरोग निवृत्तिः सर्व मंगल अवाप्तिः समस्त सन्मंगल अवाप्तिः अष्टैश्वर्य अभिवृद्धिः श्री सांब चरणारविंदयोः अचंचला भक्ति सिद्धिश्च भूयाधृति भवन्तो महान्तो अनुगृह्णन्तु. अस्मिन् यज्ञ मंडपे आवाहितस्य निंदितद्योग बंधीक नंदित गंधाध्यसन बृंदारक बृंद बंदित निष्पंद निज नयनारविंद स्यंदित आनंदाश्रु बिंदु संदोह स्यंदोहित निरवधि मुख नीरधी पूरधी मुदित दुश्चरित वृच्चन
ನಿಜಶ್ರೀದಾಶ್ಚರ್ಯ ತೇಜಶ್ಚ ಯದುಚ್ಚತರ ತಪಶ್ಚರಣ ವಿಪಶ್ಚಿತ ಅಪಶ್ಚಿಮ ಮುನಿಕುಲ ತಿಲಕ ಸುವಿಮಲ ಹೃದಯ ಹರ್ಮ್ಯತಲ ಸತತ ವಿಹಿತ ಖೇಲನ ಮಾನಸಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಾಂಬ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯ ಯೋಗಿ ಯೋಗೀಶ್ವರಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಭಕ್ತ ಮಹಾಜನಾನಾಂ ಯಥಾ ಆಗಮೋಕ್ತ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಅನುಷ್ಠಿತ ಗ್ರಹಣ ಪುಣ್ಯಕಾಲ ಪೂಜಾ ಹೋಮ ಫಲ ಅವಾಪ್ತಿ ಸದಾಗಿರಿದ ಗಿರಿಜ ಭಜನಾವಾಪ್ತಿ ನರಾವಳಿ ವಿನುತ ಚರಿತಾವಾಪ್ತಿ ಬಹುಶತ ಸಂವತ್ಸರೌಕ ಜೀವಿತಾವಾಪ್ತಿ ಸಮಧಿಗತ ಸಕಲ ಭಾಗ್ಯಾವಾಪ್ತಿ ಚಿರಲೋಕ ಪ್ರಾರ್ಥಿತ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾದಿ ನಿಖಿಲ ದೇವತಾಭಿ ಅಗಮ್ಯ ಅಖಂಡಲ ಸಾಲೋಕ ಸಾಮೀಪ ಸಾರೂಪ ಸಾಯುಜ್ಯಾದಿ ಶಿವಪದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಅಚಂಚಲ ಗುರು ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಿ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಶ್ಚ ಭೂಜಾಸುರತಿ ಭವಂತೋ ಮಹಾಂತೋ ಅನುಗೃಹಂತು ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಸಂತು ರಾಜ ಧಾರ್ಮಿಕೋ ಭವಂತು ಅಯಂ ಧರ್ಮ ಉತ್ತರೋತ್ತರಾಭಿವೃದ್ಧಿರಸ್ತು ಸರ್ವಂ ಸಾಂಬ ಶಿವೋ ರಕ್ಷತು. ஓம் வான்முகில் வளாது பெய்க மலிவளம் சுரக்க மன்னன் கோன்முறை அரசு செய்க குறைவிலாது உயிர்கள் வாழ்க நான்மறை அரண்கள் ஓங்க நற்றவம் வேள்வி மல்க மேன்மை கொள் சைவ நீதி விளங்குக உலகமெல்லாம். ஹர நம பார்வதி பதயே ஹர ஹர மகாதேவா.
Nithyanandeshwar Sadashiva Samarambam Nithyanandeshwari Adi Shakti Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. I welcome all of you for this wonderful Homa, awakening auspicious energy of Sadashiva's presence and also bringing completion and a very powerful positive energy awakening on this beautiful lunar eclipse, and ultimately preparation and sharing of Mahasadashiva Aushadha. As I said in the last session, last Sunday, Mahasadashiva Aushadha is just bringing Mahasadashiva's energy into this Aushadha. So when you apply in your system, in your body, mind and the space, Mahasadashiva's energy is awakened. You have
powerful state, space and powers of Mahasadashiva happening in you. Now we will start the preparation of Mahasadashiva Aushadha. கந்தீடை காடரும் போகர் புலிக்கையீசர் கருவூரார் கொங்கணவர் காலாஞ்சி சிந்தி அழுகண்ணர் அகப்பேயர் பாம்பாட்டி தேரையரும் குதம்பயரும் சட்டைநாதர் செந்தமிழ் சேர் சித்தர் 18 பாதம் சிந்தையுன்னி சிரத்தணியாய் சேர்த்தி வாழ்வாம். Shiva
அல்லல் அறுத்து ஆனந்தமாக்கியதே எல்லை மறுவா நெறியளிக்கும் வாத ஊர் எங்கோன் திருவாசகம் எனும் தேன் திருவாசகம் எனும் தேன் என்னாளுடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி என்னாளுடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி நமச்சிவாய வாழ்க நாதம் தாழ் வாழ்க நமச்சிவாய வாழ்க நாதம் தாழ் வாழ்க இமைப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ்வாழ்க இமைப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ்வாழ்க கோகழி ஆண்ட குருமனிதன் தாழ்வாழ்க கோகழி ஆண்ட குருமனிதன் தாழ்வாழ்க ஆகமம் ஆகி நின்று அன்னிப்பான் தாழ்வாழ்க ஆகமம் ஆகி நின்று அன்னிப்பான் தாழ்வாழ்க ஏகன் அநேகன் இறைவன் அடி வாழ்க ஏகன் அநேகன் இறைவன் அடி வாழ்க என்னாளுடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி என்னாளுடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி வேகம் கெடுத்து ஆண்ட வேந்தனடி வெல்க வேகம் கெடுத்து ஆண்ட வேந்தனடி வெல்க பிறப்பறுக்கும் பிஞ்சகந்தன் பெய்கடல்கள் வெல்க பிறப்பறுக்கும் பிஞ்சகந்தன் பெய்கடல்கள் வெல்க புறத்தார்க்கு சேயோந்தன் பூங்கடல்கள் வெல்க புறத்தார்க்கு சேயோந்தன் பூங்கடல்கள் வெல்க கரம் குவிவார் உள்மகிழும் கோன்கடல்கள் வெல்க கரம் குவிவார் உள்மகிழும் கோன்கடல்கள் வெல்க சிரம் குவிவார் ஓங்குவிக்கும் சீரோன்கடல் வெல்க சிரம் குவிவார் ஓங்குவிக்கும் சீரோன்கடல் வெல்க ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர ஈசன் அடி போற்றி எந்தை அடி போற்றி ஈசன் அடி போற்றி எந்தை அடி போற்றி நேசன் அடி போற்றி சிவன் சேவடி போற்றி நேசன் அடி போற்றி சிவன் சேவடி போற்றி நேயத்தெரின்ற நிமலன் அடி போற்றி நேயத்து நின்ற நிமலன் அடி போற்றி மாய பிறப்பறுக்கும் மன்னன் அடி போற்றி மாய பிறப்பறுக்கும் மன்னன் அடி போற்றி சீரார் பெருந்துரை நம் தேவன் அடி போற்றி சீரார் பெருந்துரை நம் தேவன் அடி போற்றி ஆராத இன்பம் அருளும் மலை போற்றி ஆராத இன்பம் அருளும் மலை போற்றி
அவன் அவன் என் சிந்தையுள் நின்ற அதனால் அவன் அருளாலே அவன் தாழ்வணங்கி சிவன் அவன் என் சிந்தையுள் நின்ற அதனால் அவன் அருளாலே அவன் தாழ்வணங்கி சிந்தை மகிழ சிவபுராணம் தன்னை சிந்தை மகிழ சிவபுராணம் தன்னை முந்தை வினை முழுதும் ஓய உரைப்பன் யான் முந்தை வினை முழுதும் ஓய உரைப்பன் யான் கண்ணுதலான் தன் கருணை கண்காட்ட வந்தேதி கண்ணுதலான் தன் கருணை கண்காட்ட வந்தேதி எண்ணுதற்கு எட்டா எழிலார் கடல் இறைஞ்சி எண்ணுதற்கு எட்டா எழிலார் கடல் இறைஞ்சி விண்ணிறைந்து மண் நிறைந்து மிக்காய் விளங்கு ஒளியாய் விண்ணிறைந்து மண் நிறைந்து மிக்காய் விளங்கு ஒளியாய் என் இறந்து எல்லையிலாதானே நின் பெரும் சீர் பொல்லாவினையேன் புகழுமாறு ஒன்றறியேன் பொல்லாவினையேன் புகழுமாறு ஒன்றறியேன் ஓம் நம சிவாய ஓம் ஓம் நம சிவாய ஓம் ஓம் நம சிவாய ஓம் ஓம் நம சிவாய ஓம் புல்லாகி பூடாய் புழுவாய் மரமாகி புல்லாகி பூடாய் புழுவாய் மரம் ஆகி பல்மிருகமாகி பறவையாய் பாம்பாகி பல்மிருகம் ஆகி பறவையாய் பாம்பாகி கல்லாய் மனிதராய் பேயாய் கணங்களாய் கல்லாய் மனிதராய் பேயாய் கணங்களாய் வல் அசுரராகி முனிவராய் தேவராய் வல் அசுரராகி முனிவராய் தேவராய் செல்லாது நின்ற தாவர சங்கமத்துள் செல்லாது நின்ற தாவர சங்கமத்துள் எல்லா பிறப்பும் பிறந்திழைத்தேன் எம்பெருமான் எல்லா பிறப்பும் பிறந்திழைத்தேன் எம்பெருமான் திருவண்ணாமலை ஜோதிய போற்றி திருச்சிற்றம்பல நாயக போற்றி திருவண்ணாமலை ஜோதிய போற்றி திருச்சிற்றம்பல நாயக போற்றி மெய்யே உன் பொன்னடிகள் கண்டு இன்று வீடுற்றேன் மெய்யே உன் பொன் அடிகள் கண்டு இன்று வீடுற்றேன் உய்ய என் உள்ளத்துள் ஓங்காரமாய் நின்ற உய்ய என் உள்ளத்துள் ஓங்காரமாய் நின்ற மெய்யே உன் பொன்னடிகள் கண்டு இன்று வீடுற்றேன் உய்ய என் உள்ளத்துள் ஓங்காரமாய் நின்ற மெய்யா விமலா விடைப்பாக வேதங்கள் மெய்யா விமலா விடைப்பாக வேதங்கள் ஐயா எனவோ
மிளிர்கின்றமை சுடரே மெய்ஞானமாகி மிளிர்கின்றமை சுடரே எஞ்ஞானம் இல்லாதே இன்பப் பெருமானே எஞ்ஞானம் இல்லாதே இன்பப் விக்கும் நல்லறிவே அஞ்ஞானம் தன்னை அகழ்விக்கும் நல்லறிவே அகழ்விக்கும் நல்லறிவே அளவு இறுதியில்லாய் அனைத்துலகும் ஆக்குவாய் காப்பாய் அழிப்பாய் ஆக்கம் அளவு இறுதியில்லாய் அனைத்துலகும் ஆக்குவாய் காப்பாய் அழிப்பாய் அருள் தருவாய் போக்குவாய் என்னை புகுவிப்பாய் நின் தொழும்பின் போக்குவாய் என்னை புகுவிப்பாய் நின் தொழும்பின் நாட்டத்தின் நேரியாய் சேயாய் நணியானே நாட்டத்தின் நேரியாய் சேயாய் நணியானே மாற்றம் மனம் கழிய நின்ற மறையோனே மாற்றம் மனம் கழிய நின்ற மறையோனே நின்ற மறையோனே கரந்த பால் கண்ணலோடு நெய் கலந்தார் போல கரந்த பால் கண்ணலோடு நெய் கலந்தார் போல சிறந்து அடியார் சிந்தனையுள் தேனூரி நின்று சிறந்து அடியார் சிந்தனையுள் தேனூரி நின்று பிறந்த பிறப்பருக்கும் எங்கள் பெருமான் பிறந்த பிறப்பருக்கும் எங்கள் பெருமான் நிறங்கள் ஓரைந்துடையாய் விண்ணோர்கள் ஏத்த நிறங்கள் ஓர் ஐந்துடையாய் விண்ணோர்கள் ஏத்த மறைந்திருந்தாய் எம்பெருமான் மறைந்திருந்தாய் எம்பெருமான் வல்வினையேன் தன்னை மறைத்திட மூடிய மாய இருளை வல்வினையேன் தன்னை மறைத்திட மூடிய மாய இருளை அறம் பாவம் என்னும் அரும் கயிற்றால் கட்டி அறம் பாவம் என்னும் அரும் கயிற்றால் கட்டி புறம் தோல் போர்த்து எங்கும் புழு அழுக்கு மூடி புறம் தோல் போர்த்து எங்கும் புழு அழுக்கு மூடி மலம் தோறும் 9 வாயில் குடிலை மலம் தோறும் 9 வாயில் குடிலை மலங்கப் புலன் 5 வஞ்சனையை செய்ய
வழங்கப் புலன் ஐந்தும் வஞ்சனையை செய்ய விளங்கும் மனத்தால் விமலா விளங்கும் மனத்தால் விமலா உனக்கு கலந்து அன்பாகி கசிந்து உள்வுருகும் கலந்த அன்பாகி கசிந்து உள்வுருகும் நலந்தான் நிலாத சிறியேக்கு நல்கி நலந்தான் நிலாத சிறியேற்கு நல்கி நிலந்தான் மேல் வந்தருளி நீழ்கழல்கள் காட்டி நிலந்தான் மேல் வந்தருளி நீழ்கழல்கள் காட்டி ஞாயிற்கடையாய் கிடந்த அடியேற்கு ஞாயிற்கடையாய் கிடந்த அடியேற்கு தாயில் சிறந்த தயாவான தத்துவனே தாயில் சிறந்த தயாவான தத்துவனே மாசற்ற ஜோதி மலர்ந்த மலர்ச்சுடரே மாசற்ற ஜோதி மலர்ந்த மலர்ச்சுடரே தேசனே தேன் ஆரமுதே சிவபுரனே தேசனே தேன் ஆரமுதே சிவபுரனே பாசமா பற்றறுத்து பாரிக்கும் மாரியனே பாசமாம் பற்றறுத்து பாரிக்கும் மாரியனே நேச அருள் புரிந்து நெஞ்சில் வஞ்சம் கெட நேச அருள் புரிந்து நெஞ்சில் வஞ்சம் கெட பேராது நின்ற பெருங்கருணை பேராரே பேராது நின்ற பெருங்கருணை பேராரே ஆறாமுதே அளவிலா பெம்மானே ஆறாமுதே அளவிலா பெம்மானே ஓராதார் உள்ளத் தொழிக்கும் ஒளியானே ஓராதார் உள்ளத் தொழிக்கும் ஒளியானே நீராய் உருக்கிய ஆறுயிராய் நின்றானே நீராய் உருக்கிய ஆறுயிராய் நின்றானே இன்பமும் துன்பமும் இல்லானே உள்ளானே இன்பமும் துன்பமும் இல்லானே உள்ளானே அன்பருக்கு அன்பனே யாவையுமாய் அல்லையுமாம் சோதியனே துங்கிருளே தோன்றா பெருமையனே அன்பருக்கு அன்பனே யாவையுமாய் அல்லையுமாம் சோதியனே துங்கிருளே தோன்றா பெருமையனே ஆதியனே அந்தம் நடுவாகி அல்லானே ஆதியனே அந்தம் நடுவாகி அல்லானே ஈர்த்து என்னை ஆட்கொண்ட எந்தை பெருமானே ஈர்த்து
உண்மை ஞானத்தால் கொண்டுணர்வார் தம் கருத்தின் நோக்கரிய நோக்கே நுணுக்கரிய நுண் உணர்வே நோக்கரிய நோக்கே நுணுக்கரிய நுண் உணர்வே போக்கும் வரவும் உணர்வும் இலா புண்ணியனே போக்கும் வரவும் உணர்வும் இலா புண்ணியனே காக்கும் எம் காவலனே காண்பரிய பேரொளியே காக்கும் எம் காவலனே காண்பரிய பேரொளியே ஆற்று இன்ப வெள்ளமே அத்தமிக்காய் நின்ற ஆற்று இன்ப வெள்ளமே அத்தமிக்காய் நின்ற தோற்றச் சுடர் ஒளியாய் சொல்லாத நுண்ணுணர்வாய் தோற்றச் சுடர் ஒளியாய் சொல்லாத நுண்ணுணர்வாய் மாற்றமா வையகத்தின் வெவ்வேறே வந்தறிவாம் மாற்றமா வையகத்தின் வெவ்வேறே வந்தறிவாம் தேற்றனே தேற்ற தெளிவே என் சிந்தனையுள் தேற்றனே தேற்ற தெளிவே என் சிந்தனையுள் ஊற்றான உண்ணாரமுதே உடையானே ஊற்றான உண்ணாரமுதே உடையானே உடையானே வேற்று விகார விடக்குடம்பின் உள்கிடப்ப வேற்று விகார விடக்குடம்பின் உள்கிடப்ப ஆற்றே எம் ஐயா அரணே ஓ என்றென்று ஆற்றே எம் ஐயா அரணே ஓ என்றென்று போற்றி புகழ்ந்திருந்து பொய்கெட்டு மெய்யானார் போற்றி புகழ்ந்திருந்து பொய்கெட்டு மெய்யானார் மீட்டு இங்கு வந்து வினை பிறவி சாராமே மீட்டு இங்கு வந்து வினை பிறவி சாராமே கள்ள புலக்குரம்பை கட்டழிக்க வல்லானே கள்ள புலக்குரம்பை கட்டழிக்க வல்லானே நள்ளிருளில் நட்டம் பயின்றாடும் நாதனே நள்ளிருளில் நட்டம் பயின்றாடும் நாதனே நள்ளிருளில் நட்டம் பயின்றாடும் நாதனே தில்லையுள் கூத்தனே தென் பாண்டி நாட்டானே தில்லையுள் கூத்தனே தென் பாண்டி நாட்டானே அல்லல் பிறவி அறுப்பானேவோ என்று அல்லல் பிறவி அறுப்பானேவோ என்று சொல்லற்கு அறியானை சொல்லி திருவடிக்கு சொல்லற்கு அறியானை சொல்லி திருவடிக்கு சொல்லிய பாட்டின் பொருள் உணர்ந்து சொல்லுவார் சொல்லிய
பாட்டின் பொருள் உணர்ந்து சொல்லுவார். செல்வர் சிவபுரத்தின் உள்ளார், செல்வர் சிவபுரத்தின் உள்ளார். சிவனடிக்கு பல்லோரும் ஏத்து பணிந்து, சிவனடிக்கு பல்லோரும் ஏத்து பணிந்து, பல்லோரும் ஏத்து பணிந்து, பல்லோரும் ஏத்து பணிந்து. வேயுறு தோழி பங்கன் விடம் உண்டு கண்டன், மிக நல்ல வீணை தடவே. மாசரு திங்கை கங்கை முடிமேல் அணிந்து என் உளமே புகுந்த அதனால், ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி பாம்பிரண்டும் உடனே. ஆசரு நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியாரவர்க்கு மிகவே, அடியாரவர்க்கு மிகவே, அடியாரவர்க்கு மிகவே. என்பொடு கொம்பொடு ஆமை இவை மார்பு இலங்க, எருதேறி ஏழை உடனே. பொன்பொறி மத்த மாலை புனல் சூடி வந்து, என் உளமே புகுந்த அதனால், ஒன்பதொடு ஒன்றொடு 7 18 6 உடனாய நாட்கள் அவைதாம். அன்பொடு நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியாரவர்க்கு மிகவே, அடியாரவர்க்கு மிகவே, அடியாரவர்க்கு மிகவே. பவளமேனி ஒளி நீரணிந்து, உமையோடும் வெள்ளை விடை மேல் முருகுகலர் கொன்றை திங்கள் முடிமேல் அணிந்து என் உளமே புகுந்த அதனால், திருமகள் கலையது ஊதி ஜெயமாது பூமி, திசை தெய்வமான பலவும் அருணேரி நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியாரவர்க்கு மிகவே, அடியாரவர்க்கு மிகவே, அடியாரவர்க்கு மிகவே.
மதினுதல் மங்கையோடு வட ஆயிருந்து மறை ஓதும் எங்கள் பரமன் நதியோடு கொன்றை மாலை முடிமேல் அணிந்து என் உளமே புகுந்த அதனால் கொதி ஒரு காலன் அங்கி நமனோடு தூதர் கொடு நோய்கள் ஆன பலவும் அதிகுணம் நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியாரவர்க்கு மிகவே அடியாரவர்க்கு மிகவே அடியாரவர்க்கு மிகவே நஞ்சு அணி கண்டன் எந்தை மடவாழ்தனோடும் விடையேறும் நங்கள் பரமன் துஞ்சு இருள் வன்னி கொன்றை முடிமேல் அணிந்து என் உளமே புகுந்த அதனால் வெம்சின அவுணரோடும் உறும் இடியும் இன்னும் மிகையான பூதம் அவையும் அஞ்சிடும் நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியாரவர்க்கு மிகவே அடியாரவர்க்கு மிகவே அடியாரவர்க்கு மிகவே அதள தாடை வரி கோவணத்தர் மடவாழ்தனோடும் உடனாய் நாள் மலர் வன்னி கொன்றை நதி சூடி வந்து என் உளமே புகுந்த அதனால் கோளறி உழுவையோடு கொலை ஆணை கேழல் கொடுநாகமோடு கரடி ஆளறி நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியாரவர்க்கு மிகவே அடியாரவர்க்கு மிகவே அடியாரவர்க்கு மிகவே மூலைநல் மங்கை ஒரு பாகமாக விடையேறு செல்வன் அடைவார் ஒப்பு இளமதியும் அப்பு முடிமேலணிந்து என் உளமே புகுந்த அதனால் வெப்போடு குளிரும் வாதம் மிகையான பித்தும் வினையான வந்து நலியா அப்படி நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியாரவர்க்கு மிகவே அடியாரவர்க்கு மிகவே அடியாரவர்க்கு மிகவே வேள்பட விழி செய்தன்று விடை மேல் இருந்து மடவாழ்தனோடும் உடனாய் வான்மதி வன்னி கொன்றை மலர்ச்சூடி வந்து என் உளமே புகுந்த அதனால் ஏழ்கடல் சூழிலங்கை அரையந்தனோடும் இடரான வந்து நலியா ஆழ்கடல் நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியாரவர்க்கு மிகவே அடியாரவர்க்கு மிகவே
அவன் பசு ஏறும் எங்கள் பரமன் சலமகளோடெருக்கு முடிமேல் அணிந்து என் உளமே புகுந்த அதனால் மலர்மிசையோனும் மாலும் மறையோடு தேவர் வருகாலமான பலவும் அலைகடல் மேறு நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவர்க்கு மிகவே அடியார் அவர்க்கு மிகவே அடியார் அவர்க்கு மிகவே ஒத்து அலர்குழலியோடு விசையற்கு நல்கு குணமாய வேட விகிர்தன் மத்தமும் மதியும் நாகமுடி மேலணிந்து என் உளமே புகுந்த அதனால் ஒத்தரோடு அமனை வாதில் அழிவிக்கும் அண்ணல் திருநீரு செம்மை திடமே அத்தகு நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியாரவர்க்கு மிகவே அடியாரவர்க்கு மிகவே அடியாரவர்க்கு மிகவே பொழில் கொள் ஆலை விளை செந்நெல் துண்ணே வளர் செம்பொன் எங்கும் நிகழ நான் முகன் ஆதியாய பிரமாபுரத்து மறைஞான ஞான முனிவன் தான் உரு கோளும் நாளும் அடியாரை வந்து நலியாத வண்ணம் உரை செய் ஆன சொல் மாலை ஓதும் அடியார்கள் வானில் அரசாழ்வர் ஆணை நமதே அரசாழ்வர் ஆணை நமதே அரசாழ்வர் ஆணை நமதே அரசாழ்வர் ஆணை நமதே. மந்திரமாவது நீரு வானவர் மேலது நீரு சுந்தரமாவது நீரு துதிக்கப்படுவது நீரு தந்திரமாவது நீரு சமயத்தில் உள்ளது நீரு செந்துவர் வாயுமை பங்கன் திரு ஆலவாயன் திருநீரே ஆலவாயன் திருநீரே திரு ஆலவாயன் திருநீரே. வேதத்தில் உள்ளது நீரு வெம்புய தீர்ப்பது நீரு போதம் தருவது நீரு உண்மை தவிர்ப்பது நீரு ஓதத் தகுவது நீரு உண்மையில் உள்ளது நீரு சீத புனல் வயல் சூழ்ந்த திரு ஆலவாயன் திருநீரே ஆலவாயன் திருநீரே திரு ஆலவாயன் திருநீரே.
தருவது நீரு, முனிவர் அணிவது நீரு, சத்தியமாவது நீரு, தக்கோர் புகழ்வது நீரு, பக்தி தருவது நீரு, பரவ இனியது நீரு, சித்தி தருவது நீரு, திரு ஆலவாயன் திருநீரே, ஆலவாயன் திருநீரே, திரு ஆலவாயன் திருநீரே. காண இனியது நீரு, கவினை தருவது நீரு, பேணி அணிபவர்க்கு எல்லாம் பெருமை கொடுப்பது நீரு, மானம் தகைவது நீரு, மதியை தருவது நீரு, சேணம் தருவது நீரு, திரு ஆலவாயன் திருநீரே, ஆலவாயன் திருநீரே, திரு ஆலவாயன் திருநீரே. பூசை இனியது நீரு, புண்ணியம் ஆவது நீரு, பேச இனியது நீரு, பெருந்தவத்தோர்களுக்கெல்லாம் ஆசை கெடுப்பது நீரு, அந்த மது ஆவது நீரு, தேசம் புகழ்வது நீரு, திரு ஆலவாயன் திருநீரே, ஆலவாயன் திருநீரே, திரு ஆலவாயன் திருநீரே. அர்த்தமது ஆவது நீரு, அவலம் அறுப்பது நீரு, வருத்தம் தணிப்பது நீரு, வானம் அழிப்பது நீரு, பொருத்தமது ஆவது நீரு, புண்ணியர் பூசுங்கள் நீரு, திருத்தகு மாளிகை சூழ்ந்த திரு ஆலவாயன் திருநீரே, ஆலவாயன் திருநீரே, திரு ஆலவாயன் திருநீரே. வெயில் அது அட்டது நீரு, இருமைக்கும் உள்ளது நீரு, பயிலப்படுவது நீரு, பாக்கியமாவது நீரு, துயிலை தடுப்பது நீரு, சுத்தமது ஆவது நீரு, அயிலை பொலிதரு சூலத்து, ஆலவாயன் திருநீரே, திரு ஆலவாயன் திருநீரே, திரு ஆலவாயன் திருநீரே.
தகுவது நீரு பராவணமாவது நீரு பாவம் மறுப்பது நீரு தராவணமாவது நீரு தத்துவமாவது நீரு அராவணங்கும் திருமேனி ஆலவாயன் திருநீரே திரு ஆலவாயன் திருநீரே திரு ஆலவாயன் திருநீரே மாலோடு அயன் அறியாத வண்ணமும் உள்ளது நீரு மேல்முறை தேவர்கள் தங்கள் மெய்யது வெண்பொடி நீரு ஏல உடம்பு இட தீர்க்கும் இன்பம் தருவது நீரு ஆலம் அது உண்டமிடற்று எம் ஆலவாயன் திருநீரே ஆலவாயன் திருநீரே திரு ஆலவாயன் திருநீரே குண்டிகை கையர்களோடு சாக்கியர் கூட்டமும் கூட கண்டிகை பிப்பது நீரு கருத இனியது நீரு என் திசைப்பட்ட பொருளார் ஏத்தும் தகையது நீரு அண்டத்தவர் பணிந்து ஏத்தும் ஆலவாயன் திருநீரே ஆலவாயன் திருநீரே திரு ஆலவாயன் திருநீரே ஆற்றில் அடல் விடை ஏறும் ஆலவாயன் திருநீற்றை போற்றி புகழி நிலாவும் பூசுரன் ஞான சம்பந்தன் தேற்றி தென்னன் உடல் உற்ற தீப்பிணி ஆயின தீரச் சாற்றிய பாடல்கள் பத்தும் வல்லவர் நல்லவர் தாமே வல்லவர் நல்லவர் தாமே வல்லவர் நல்லவர் தாமே காரல்லாகி கசிந்து கண்ணீர் மல்கி ஓதுவர் தம்மை நன்னெறிக்கு உய்ப்பது வேதம் நான்கினும் மெய்ப்பொருள் ஆவது நாதன் நாமம் நமச்சிவாயவே நாதன் நாமம் நமச்சிவாயவே நம்புவார் அவர் நாவின் நவிற்றினார் வம்பு நாள் மலர் வார்மது ஒப்பது செம்பொனார் திலகம்
உலகுக்கு எல்லாம் நம்பன் நாமம் நமச்சிவாயவே நம்பன் நாமம் நமச்சிவாயவே ஜய ஜய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஜய ஜய சங்கர ஜய ஜய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஜய ஜய சங்கர நெக்குள் ஆர்வம் மிகப் பெருகி நினைந்து அக்கு மாலை கொடு அம்கையில் எண்ணுவார் தக்க வானவராய் தகுவிப்பது நக்கன் நாமம் நமச்சிவாயவே நக்கன் நாமம் நமச்சிவாயவே ஜய ஜய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஜய ஜய சங்கர ஜய ஜய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஜய ஜய சங்கர நியமன் தூதரும் அஞ்சுவர் இன்சொலார் நயம் வந்து ஓத வல்லாத்தமை நன்னினார் நியமம் தான் நினைவார்க்கு இனியான் நெற்றி நயனன் நாமம் நமச்சிவாயவே நயனன் நாமம் நமச்சிவாயவே ஜய ஜய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஜய ஜய சங்கர ஜய ஜய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஜய ஜய சங்கர கொள்வாரேனும் குணம் பல நன்மைகள் எல்லாரேனும் இயம்புவர் ஆயிடின் எல்லா தீங்கையும் நீங்குவர் என்பரால் நல்ல நாமம் நமச்சிவாயவே நல்ல நாமம் நமச்சிவாயவே ஜய ஜய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஜய ஜய சங்கர ஜய ஜய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஜய ஜய சங்கர மந்திரமான பாவங்கள் மேவியே கந்தனை அவர் தாமும் பகர்வரே சிந்தும் வல்வினை செல்வமும் மல்குமால் நந்தி நாமம் நமச்சிவாயவே நந்தி நாமம் நமச்சிவாயவே ஜய ஜய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஜய ஜய சங்கர ஜய ஜய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஜய ஜய சங்கர நரகம் ஏற்றுக நாடினர் ஆயினும் உரை செய்வாயினர் ஆயின் உருத்திரல் பிறவிய புகுவித்திடும் என்பரால் வரதன் நாமம் நமச்சிவாயவே வரதன் நாமம் நமச்சிவாயவே ஜய ஜய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஜய ஜய சங்கர ஜய ஜய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஜய ஜய சங்கர இலங்கை மன்னன் எடுத்த அடுக்கல் மேல் தலம் கொள் கால் விரல் சங்கரன் ஊன்றலும் மலங்கி வாய்மொழி செய்தவன் உய்வகை நலங்குள் நாமம் நமச்சிவாயவே நலங்குள்
நமச்சிவாயவே போதன் போது ஆன கண்ணனும் அண்ணல்தன் பாதம் தான் முடி நேடிய பண்பராய் யாதும் காண்பரிது ஆகி அலந்தவர் போதும் நாமம் நமச்சிவாயவே போதும் நாமம் நமச்சிவாயவே கஞ்சி மண்டையர் கையில் உன் கையர்கள் வெஞ்சொல் மிண்டர் விரவிலர் என்பரால் விஞ்சை அண்டர்கள் வேண்ட அமுதுசை நஞ்சு உன் கண்டன் நமச்சிவாயவே நஞ்சு உன் கண்டன் நமச்சிவாயவே நந்திநாமம் நமச்சிவாய என்னும் சந்தையால் தமிழ் ஞான சம்பந்தன் சொல் சிந்தையால் மகிழ்ந்து ஏத்த வல்லார் எல்லாம் வந்த பாசம் அறுக்க வல்லார்களே வந்த பாசம் அறுக்க வல்லார்களே Requesting all the Nithyananda Yoga Teachers Training participants to please come up on the stage for the darshan. All the Nithyananda Yoga Teachers Training participants, please come up on the stage to receive blessings from Swamiji. Swamiji is now blessing all the Nithyananda Yoga Teachers Training Graduation Certificate, which is issued by the Nithyananda University, which is recognized by the Government of America. All the Nithyananda Yoga Teachers Training participants will be receiving their graduation certificate.